A very good morning to all of you. I welcome you all to our today's session. Today being a special day, we have our session by none other than CA Pinki Kedia here, who's also the Vikasa chairperson. She will be guiding us on the very important topic of TDS provisions, the recent developments and practical issues. Also today, it's my proud privilege to announce that we have a mega blood donation and health checkup camp, which is open to all. So I request you all to participate in that also and take benefit for the noble cause. Before we start our meeting, I request you all to please stand up for the Institute motto, sir. Please keep standing for the national anthem. To formally introduce our today's faculty, I would like to invite CA Manish Kedia ji, who's also a past leader. Thank you, Convener. As such, today's speaker does not require any introduction to this gathering because he is our own member from more than 1.5 decades. She is also Vikasa chairman, as just informed, and regional council member. So formally, she does not require any such introduction. However, as a formality, I would just like to go through few points. She is a chartered accountant, serving this profession from last 2 decades and specializing in taxation, auditing, and other fields. And now serving our profession by coming into a regional council and wishes to go ahead to central in future.
She has been involved in various social and cultural activities also, like she initiated Swachh Bharat Jan Jagrut yeah, Jagrutak Abhiyan, Jagrutak Abhiyan project रहने हम सावधान project सावधान okay रहे हम सावधान okay okay sorry I was not part of that program that day for some reason. And today we have also share along with PUSG, we have inaugurated a health checkup and blood donation camp in line with that. With this short introduction, I uh, welcome Pinki ji to this gathering. May I request PUSG to give a small moment on behalf of our JP Nagar Study Circle. आज TDS का प्रोग्राम है ना यूजली TDS का प्रोग्राम है तो TDS floor is yours, Pinky. Request everybody to put their phones on silent. Before starting my session, I want to request our CCM Piyush Hajarji to say a few words for our today's camp because it's from ICI and hosted by JB Nagar Study Circle. So I request a few words about this initiative. Thank you very much, Pinki, Regional Council Member, Vikasa Chairman, past convener of JB Nagar Study Circle, Purviji Convener, Vijeta ji, Deputy Convener, Coordinator for the day, Manish ji, various past conveners, ST members of JB Nagar Study Circle. It's always a pleasure to be amongst here. My congratulations and compliments to the convener and deputy convener and the whole team who is coordinating this event. The blood camp is, we have been doing this blood camp across India. And it is also a part of the initiative of ICI because it is celebrating 75 years. And on 1st July 2023, the institute entered into the 75 years. And there are various programs which will be done. So the week-wise, the programs have been revised. And this week is for the blood bank and to do a social activity. Wherein 168 branches are doing some activity, some or other activity, and mostly blood banks are happening this year. So idea behind the institute is that this 75 years should be celebrated, whereby we connect to the general public as such from an ICI perspective. Now, up till now, we were only connecting to our members or maybe the students, but to actually increase the reach to a general public. So general public also knows what ICI is all about. And also with the regulatory bodies, the hospitality bodies, or the people who are actually engaged in the social service. So this is the then idea. My best wishes to JB Nagar Study Circle. Obviously, they are also, for them, this is also important because they themselves are celebrating Silver Jubilee, 25th year. And so I would request the convener, they should actually keep on doing such programs in this 25 years. It's always a celebration for a whole year. So it's not a single day. And I thank you very much for giving me this opportunity. It's always a pleasure to be amongst you. Thank you. Thank you, Piyush. So every last year also we did this blood donation camp on CA Day, and I think we are doing since last 15 years we are doing blood donation camp and health checkup camp in our study circle. So it's our regular camp, and I appeal all the participants here to go for health checkup and for blood donation also. And Tata Memorial people had come for this blood donation. वहां पे बहुत जरूरत है ब्लड की, तो प्लीज आप लोग देंगे तो अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने कुछ सोसाइटी के लिए किया.
So thank you, convener and Mahesh ji, to give me this opportunity for stand behind you on the topic TDS. This year in TDS, there are not much changes, but what is the changes, what the impact of that changes, I want to cover in that thing. And this is the disclaimer from my side कि जो भी है, this is my opinion, what is written in the Finance Act and in the section. And if you want to take any decision, please go through the section and various judgment and notification regarding that. फर्स्ट सबसे पहले टीडीएस प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है, मैं हमेशा सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ, इसलिए हमेशा ये मेरी फर्स्ट स्लाइड रहती है. बिकॉज वी जनरली फॉरगॉट की रेंट यदि 50,000 से ऊपर पेमेंट होता है मंथली, देन ऑल्सो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. अभी लास्ट मोमेंट पे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, एम्प्लॉई हैं, सैलरीड पर्सन है, एंड दे आर पेइंग मोर देन 50,000 एज ए रेंट, बट दे आर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस. So for that it is required. And in case of NRI, they also require to deduct TDS even if the rent is 5,000 only per month. Then also they require to deduct TDS. So in case of NRI, there is no threshold limit. तो यदि आपके पास वैसा क्लाइंट आता है तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने टीडीएस जमा किया है कि नहीं किया, डिडक्ट किया है कि नहीं किया. एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 देयर वाज ए थिंग कि वो 44 एडी और एडीए वाला जो था 50 lakhs और 1 crore वाला, यदि आप टीडीएस टैक्स ऑडिट में नहीं, देन ऑल्सो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस. एंड मेनी ऑफ द क्लाइंट नॉट फॉलोइंग दिस. उनको ये रहता है 44 एडी और एडीए में तो हम आ रहे हैं, हमारा टैक्स ऑडिट नहीं है तो क्यों टीडीएस डिडक्ट करना है. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. Now what the changes come into this Finance Act. First is section 192A, relaxation for non-pen holder. From 1st April 2023, if employee is receiving accumulated balance of EPF and he is non-pen holder, तो पहले क्या होता था, they have to deduct the TDS at the marginal tax rate. But अभी उन्हें दिया है, relaxation दिया है, so the TDS will be deducted at the rate of 20% instead of marginal tax rate. तो ये एक वेलकम changes है. So, and the lower tax deduction rate will provide relief to many employee जो जिनके पास भी पेन नहीं है. Second, section 193. In section 193, there was some interest on security in which TDS is not to be TDS नहीं था. TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती थी if the security is listed in recognized stock exchange. So at that so क्या होता, बहुत बार ये मिस आउट हो जाता था कि हम वो अपनी ITR में उसको शो नहीं करते थे उसको, क्योंकि TDS डिडक्ट नहीं होता था तो वो निकल जाता था ध्यान से कि वो डिडक्ट वो दिखाना है. जैसे प्रोविजन खाली होके रह गया, मिला नहीं है तो वो निकल जाता था, दिखाते ही नहीं थे कोई. अभी इन लोगों ने क्या किया, यदि डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है देन ऑल्सो TDS टू बी डिडक्ट. तो आपका इनकम जो भी है वो सारी रिपोर्ट हो जाएगी. उसके लिए इन लोगों ने ये नया से इसमें ऐड कर दिया है 193 में कि डिवेंचर्स के ऊपर भी ये हो जाएगा. देन सेक्शन 194B. In section 194B, there was a TDS on winning from lottery, crossword puzzles and online game and cards सब included थे. This year उन लोगों ने थोड़े separate कर दिए उसको. ठीक है, तो first of all they change the heading from winning from lottery, crossword puzzle, card game and other game of any sort. Now they change to only winning from lottery and crossword puzzles. So there is no any card game and other game. And from 1st April 2023, पहले क्या होता था कि वो 10,000 का ऐसे लिमिट दिया हुआ था, बट 10,000 पर ट्रांजेक्शन था कि पर ईयर था, इट वाज नॉट डिफाइंड. तो पब्लिक क्या करते थे कि छोटे छोटे डिवाइड कर देते थे, 10,000 के अंदर कर देते थे उसको, तो उस पर TDS का वो नहीं आता था डिडक्शन का. नाउ इट हैज बीन डिफाइंड कि जो भी है वो 10,000 पर ईयर है थ्रेशोल्ड लिमिट. So if the winning from lottery is more than 10,000 per year, then TDS liability will be there. So it is effective from 1st April 2023.
And winning from online game shall not be deducted as per this provision 194B. There is a separate section inserted. It is section 194BA. Okay, so they introduce new section for online gaming because अभी online gaming बहुत ज्यादा चल रही है, लोग बहुत खेल रहे हैं, तो इन्होंने separate section ही करना उसके लिए बेटर लगा, क्योंकि कुछ भी उसमें चेंजेस लाने हैं, यदि ऑनलाइन गेमिंग के लिए ही चेंजेस लाने हैं तो उनको 194B चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉपर एक सेक्शन रहे उसके लिए. 194BA TDS on winning from online games. So from 1st April 2023, the payer need to deduct tax at the rate of 30%, okay, of net winning. तो वो 30% हाईएस्ट रेट ही है, जो पहले हमारी जो लॉटरी वगैरह में थी वही थी रेट है. तो 30% ऑन द नेट विनिंग इन द यूजर अकाउंट, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंस, मतलब ये जब जब वो देंगे तब तब करना. और यदि विड्रॉन अमाउंट कुछ अकाउंट में रह जाता है तो वो आपको एट द टाइम ऑफ एट द ईयर एंड you have to deduct TDS on that at the rate of 30%. And 206AB is not applicable. 206 is not applicable to this. तो आपका ये जो रिटर्न फाइलिंग वाला कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें. 206AB लास्ट ईयर से आया है, आप सब देख रहे हो इस साल. आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब किसी ने उसके ध्यान ही नहीं दिया है 206AB पे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेती हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 206AB. इवन हमारे क्लाइंट आर नॉट यूजिंग दिस एंड दे आर नॉट टेकिंग द 206AB एट द टाइम ऑफ TDS डिडक्शन. तो 206AB इस पे एप्लीकेबल नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली TDS वुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 30%. यदि वो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है तो भी देयर इज नो एनी चेंज इन दैट. अभी इसमें एक प्लस है कि अभी ऑनलाइन गेम है, तो ऐसा होगा कि गेम यहाँ खेल रहा है, सर्वर कोई दूसरी कंट्री में है और ऑपरेट कहीं दूसरी कंट्री से हो रहा है. तो इन दैट केस टैक्स कहाँ डिडक्ट होना चाहिए, दिस क्लियरली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इस सिनेरियो में कौन सी कंट्री में वो टैक्स TDS डिडक्ट होना चाहिए. क्योंकि जब सब बोलेंगे अलग अलग ज्यूरिडिक्शन हो गए अलग अलग कंट्री के, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द सिनेरियो फॉर TDS. लेकिन यदि यूएस में सर्वर है तो यूएस वाला बोलेगा हमारे यहाँ सर्वर है तो हम काटेंगे, हमारे ऊपर टैक्स आता है उसमें. वही ये एक क्लियरिटी जरूरी है कि इसमें भी कुछ DTA लगेगा कि क्या लेके आएंगे इसमें, तो ये एक है. देन 194N अभी आप लोगों को सबको 26A में कई लोगों के अकाउंट में दिख रहे होंगे. यदि दे विड्रॉ कैश मोर देन 1 crore फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस. ओके, ये तीन जगह से इन्होंने यदि कैश 1 crore से ऊपर विड्रॉ किया है, then TDS should be deducted at the rate of 2%. And this amendment came on 1st July 2020 if the withdrawal has not filed his ROI. रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर भी बेस कर दिया था कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न भरने में वो आ जाए और एम्बेट में आ जाए रिटर्न भरने की. तो यदि रिटर्न वो नहीं भर रहे हैं देन द रेट इज 5%. तो रेट थोड़ी उन्होंने ज्यादा कर दी थी, बट अभी उन्होंने क्या किया, इस ईयर क्या चेंज किया है, ओनली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी दे हैड एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ 1 crore to 3 crore. ठीक है, अभी ये चीज मुझे नहीं समझ में आती कि 3 crore का कैश किस लिए निकालना होगा. एंड दे आर गिविंग द आर्ग्यूमेंट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से फार्मर्स को कैश निकालना होता है, छोटे छोटे लेबर्स को कैश निकालना होता है. तो छोटे छोटे लेबर या फार्मर्स 3 crore का कैश निकालेंगे, ये सोचने की बात है. वही तो इसका पर्पज क्या था वो समझ नहीं आया मुझे कि 3 crore कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्यों अलाउ किया कैश निकालना. यस यस, सब उन्हीं के हैं तो फॉर दैट पर्पज. नहीं तो जो उन्होंने इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है कि फार्मर्स को चाहिए कैश निकालना होता है, कोई भी फार्मर 3 crore रुपए निकालेगा कैश, उसके पास है इतने. That's the truth. तो अभी 206AB मैं फिर से इसको रिपीट इसलिए करना चाह रही हूँ कि लास्ट ईयर से ये ज्यादा उसमें आपको आया है देखने के लिए. इसमें क्या है कि इफ द इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ ITR,
ठीक है। तो जब 2021 फर्स्ट जुलाई 2021 फर्स्ट इट वाज इंसर्टेड इन द फाइनेंस एक्ट, and if the deductee has not filed his return for 2 previous years and his aggregate tax deduction TDS is more than 50,000 in 2 previous years, then TDS to be deducted at the twice of the rate relevant for the provision or twice the rate in force or 5%. तो इनमें से जो भी हायर था उस हिसाब से रेट TDS का डिडक्ट करना है। तो यदि आपके केस में यदि प्रोफेशनल है एंड वो प्रोफेशनल अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है और स्पेसिफाइड पर्सन में आता है, तो 10% की जगह आपको 20% TDS डिडक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्टर है तो 2% की जगह 4% TDS डिडक्ट होगा या 5%, उसका 4% नहीं होगा। व्हाट इज द रिटर्न ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स और 5%। तो वो 4% या 2% नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्टर के केस में। ये आपको तीनों चीज देख के हो सकता है उसका हायर में 20% भी चला जाए, बट कोई भी क्लाइंट मेरे को अभी नहीं मिला जो ये 206 AB का चेक कर रहा है। 22-23 में अभी कोई बहुत ही रेयर क्लाइंट ने ये चीज चेक करी है। और ये चेक करने के लिए कंप्लायंस चेक डायरेक्टली ऑनलाइन ई फाइलिंग साइट पे से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप। उसके लिए एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट आपको डाउनलोड करनी है एंड यू हैव टू गिव ऑल द पैन नंबर इन दैट एंड अपलोड इट। वो अपने आप सारी वो डिटेल निकाल के दे देंगे कि उसमें से किसने रिटर्न फाइल नहीं की हुई है और कौन स्पेसिफाइड पर्सन में आएंगे। तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है। तो अभी जब हम ऑडिट अपनी करने लगेंगे तो हमें हमारे क्लाइंट से चाहिए कि हम सारे पैन नंबर ले उनसे कि किनको किनको उन्होंने पेमेंट किया है एंड वी कैन चेक फ्रॉम आवर पैन नंबर ऑल्सो। ठीक है। तो ये एक बहुत अब इसमें भी चेंजेस किया इन लोगों ने, क्योंकि ये दिस प्रोविजन इज नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेसिडेंट हु डजंट हैव ए पी इन इंडिया। ये पहले इन लोगों ने डाल दिया था ये सेक्शन 2022 में। इन लोगों ने किया 2 इयर्स की जगह इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर किया। 2021 में 2 इयर्स का रखा था, 2022 में इन्होंने इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कर दिया कि सिर्फ 1 साल भी यदि रिटर्न फाइल नहीं करता देन आल्सो ही इज क्वालिफाइड एज ए स्पेसिफाइड पर्सन। एंड और जो जिस जिस सेक्शन को ये एप्लीकेबल नहीं है 194 IA IB एंड M। ओके, ये किस लिए इन लोगों ने IA IB और M रखा? बिकॉज दे आर नॉट इन बिजनेस, दे कैन बी ए नॉन बिजनेस एंटिटी। जैसे यदि आपसे कोई पर्सन सैलरी पर्सन है एंड ही इज नॉट इन बिजनेस, देन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू देम। तो बेसिकली 17 मई को जब सर्कुलर आया देन दे हैड एक्सक्लूडेड 194 IA IB IM एंड इन एडिशन 192 2A 194B कार्ड गेम 194B गेम एंड LB एंड कैश विड्रॉल, ये सबको ये 206 AB एप्लीकेबल नहीं है। एंड 194S वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उस पे भी ये 206 AB नहीं देखना है। फाइनेंस एक्ट 2023 में जो चेंजेज हुए, इन दैट चेंजेज दे हैड इंक्लूडेड वन थिंग इन स्पेसिफाइड पर्सन। एक पहले तो ये 1 नंबर तो पहले से ही था कि नॉन रेसिडेंट है पी नहीं है देन इट 206 AB इज नॉट एप्लीकेबल, बट नाउ दे हैड इंसर्टेड नंबर 2, a person who is not required to furnish the return। तो यदि उनको रिटर्न फाइल करने के लिए है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द सेड प्रीवियस ईयर, देन आल्सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू applicable to deduct TDS under section 206 AB। The person is filing return first time and his TDS is raise the rate or 5% whichever is higher or first time filer, because he has not filed for the earlier 2 years। नहीं तो देन उसकी रिटर्न आप देखो उसकी TDS कितने कटी हुई है पिछले सालों में 206, आपको 26 AB देन नॉट रिक्वायर्ड। What is the threshold? It is 50,000. Then 206 AB not required। With higher rate. There are 3 points. So twice the rate specified the relevant provision of the act. Twice the rate or rates in force. In दोनों फर्क क्या है? ये जो specified in act है वही in force होगा। मेरा understanding है।
इस केस में वो भी हो सकता है कि यदि डीटीए प्रोविजन है, तो यदि आप ट्वाइस द रेट, तो आपका सेक्शन वाइज हो गया, ठीक है। एंड हाँ, और तीसरा इन लोगों ने इस बार 194 BA ऑनलाइन गेम का जो नया सेक्शन डाला, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर 206 AB। तो अभी जैसे ड्यू डेट अभी TDS का जो फाइल करने के लिए टाइम है, तो अभी फर्स्ट क्वार्टर के जैसे फाइल करने के टाइम पे ड्यू कर रहे हैं, तुमको दिख रहा है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, बट सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर के बाद जब ड्यू डेट खत्म हो जाएगा तब चेंज हो जाएगा। तो विल बी गेटिंग डिमांड फॉर दैट टू पे हायर Yeah, after expiry of due date under section 139, you have to deduct, you have to check for 2023. So before that, if we have paid the payment already, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो आपने पहले पेमेंट कर चुके हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 नहीं नहीं आता है उसमें। आप कंप्लायंस चेक देखोगे ना, उसमें प्रॉपर आ जाता है। ऑनलाइन से आप देख लो कंप्लायंस चेक प्रॉपर। 31 जुलाई के बाद आप देखोगे, अभी आप निकालोगे लिस्ट, वो अलग निकलेगी। 31 जुलाई के बाद अलग लिस्ट निकलेगी। और आप यदि आप हाँ, जब ड्यू डेट के बाद के निकालोगे ना, आप चेंज हो जाती है। तो यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेक द लिस्ट इन योर रिकॉर्ड, यू हैव चेक दैट, एंड इन दैट ईयर इट वाज नॉट देयर, so you have deducted at the rate of at the rates specified in section. I am not required to file return for this financial year being my income less than 2.5 lakh. Do I have to any compliance? यही मैं भी बोलने वाली थी अभी, कि इन लोगों ने ये तो लिख दिया कि पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, but how the government will come to know that he is not required to file the return, or how I will come to know that he is not required to file the return? कंप्लायंस चेक में ये आ जाएगा कि वो नॉन रेसिडेंट है या परमानेंट। इसमें बेसिकली वो लोग वो ले रहे हैं कि जो नॉन रेसिडेंट हैं और उनको यहाँ इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करनी है, उनकी इंडिया में उतनी इनकम नहीं है, या उनको इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करनी है, देन यू डोंट हैव टू चेक 206 AB। yes but basically हाँ, बेसिकली बेनिफिट ऑफ डाउट डबल रेट ही लगाना पड़ेगा। हाँ, और अगर फाइल करते हैं देन वी विल टैक्स एट द नॉर्मल रेट, अदरवाइज विल टैक्स द। यदि जहाँ डाउट है ना, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जहाँ डाउट है आप TDS काट लो। TDS नहीं काटने से जितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जितना पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा, बेटर है कि आप TDS काट लो, सामने वाला वो रिफंड क्लेम कर लेगा ना। क्योंकि अभी कंपाउंडिंग भी सिर्फ एक ही बार होती है, और वो कंपाउंडिंग के लिए भी इतना हैरेस करते हैं कि पूछो मत। Even if you will deduct TDS or pay TDS 1 day late, there is the responsible person can be prosecuted. सेक्शन में लिखा हुआ है, he can be prosecuted even for 1 day delay. तो बेटर है कि ये क्यों रिस्क लेना है, जब वो TDS रिफंड मिल सकता है। कहीं डाउट है ऐसा तो TDS काट दीजिए। हाँ, ये है कि सामने वाले को थोड़ा कैश फ्लो में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यदि TDS काट लेते हैं तो वो फिर अगली बार बोलेगा मैं आपसे काम ही नहीं करूंगा, आप TDS हमेशा काट लेते हो, दूसरा बंदा मेरा TDS नहीं काटता है। तो वो थोड़ी प्रैक्टिकल इश्यूज है, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक अ डॉक्यूमेंटेशन विथ यू कि किस लिए आपने वो TDS नहीं काटा। आप उस बंदे से उसको ये बोल सकते हो कि भाई हमको आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दे दो कि if any if any scrutiny or anything come to me, I can reply accordingly with your document. filing the return after जो income था हमने receive from that I am filing the return, तो चलेगा? Is it a non-compliance or not? पहले ये जब फर्स्ट ईयर जब निकला था ना, तो ये एक हम लोग सबसे ये मेरे को यदि सबको याद होगा तो एक ईमेल पे सब भेज भी रहे थे वो लेने के लिए, है ना, लेटर इश्यू करते भी थे।
बट अभी जब से कंप्लायंस चेक इन लोगों ने ऑनलाइन में चेक करने के लिए डाल दिया ना, वो लोग बोलते हैं आप ऑनलाइन में चेक करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। अभी वो लेटर लेने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन चेक कर लो, क्योंकि ऑनलाइन में तो रिकॉर्ड है ना, आईटीआर फाइल किया है कि नहीं किया है। बेसिकली हम TDS काटना भूल गए। अच्छा ये आपने फाइल कर दिया, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो फिर वो सामने वाला भी कैसे देगा ना। It is ready to give चले। अभी वो तो The provision. Has paid the tax on that relevant income, then the will not be treated as या assessing. 26A, फॉर्म 26A। And but only thing is that he will have to pay interest. 26A, फॉर्म 26A इज देयर, वो लेना पड़ेगा। फॉर्म 26A इज देयर। 26A में बहुत इश्यूज आते हैं, ये निकलता ही नहीं। वही बात है, वही बात है कि फॉर्म 26A निकलता नहीं है, बिकॉज इन्हें ये टीडीएस रिटर्न में देना चाहिए, टीडीएस रिटर्न में ही ये प्रोविजन होना चाहिए, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन टीडीएस रिटर्न टिल डेट। 26A मैंने भी 2-3 लोगों के फाइल किए, किसी के भी नहीं निकले, नहीं निकले। मेरे केस में तो डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन था, और डायरेक्टर ने एडवांस टैक्स पेमेंट किया हुआ था, तो कंपनी ने उतना टीडीएस कम काटा, बट टीडीएस रिटर्न में तो वो कॉलम ही नहीं है कि हम उसमें दिखा सके कि उन्होंने एडवांस टैक्स पहले उतना पेमेंट किया हुआ, इसलिए टीडीएस कम हुए, तो उसके लिए जो लायबिलिटी आई वो निकले ही नहीं। It is really a faulty actually. I guess there was it was right. sold a plane, तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता ही नहीं था, रोज filed the return, so there was no see, तो फिर छोड़ दिया उसको भी, चलो जब आएगा तो उस तरह। हमारे केस में भी उसका हुआ नहीं, आखिर में वो डायरेक्टर ने बोला कि अब पेमेंट कर दे उसको और क्या होगा, टीडीएस पेमेंट कर दे, वापिस से रिफंड क्लेम कर लेंगे उसमें। तो this is the practical issues, and we are giving the representation to finance ministry also, but they are not taking action on this. Why? I can't understand. जब आपने ये प्रोविजन दिया हुआ है कि मैंने यदि पेमेंट कर दिया अपने पास से, तो सामने वाला जो भी है वो कम टीडीएस डिडक्ट करेगा तो भी चलेगा, तो वो चीज टीडीएस रिटर्न में भी डालो ना कहीं, तो कि मैं बता सकूं, नहीं तो अदरवाइज टीडीएस रिटर्न में तो पेबल ही आएगा। Even if we will issue form 16, then also it will reflected as the TDS payable. तो ये प्रोविजन आना बहुत जरूरी है उसमें। देन 194R TDS ऑन परक्विजिट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन लास्ट ईयर आया है, एंड अभी तक भी इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हम लोग यदि कोई भी इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है तो आई एम रेडी टू हियर फ्रॉम हिम, so he can share their experience regarding this 194R। किसी ने भी इम्प्लीमेंट किया अपने क्लाइंट के यहाँ ये 194R? नहीं किया होगा ना। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हम चेक भी कैसे करेंगे, ऑडिट भी कैसे करेंगे उसकी एक्चुअली वही 194R is the new section what we have to audit this year, and for client it is from last year also. So if any person in the business or profession and any favor or any thing provided to the resident, benefit, you can say benefit or perquisite, in salary case perquisite का meaning सबको पता है, this is for non salary cases। अभी उन्होंने नॉन सैलरी केसेस में भी यदि आपने कुछ भी, कई सारे इन लोगों ने वो दिए हैं कि किसको आप परक्विजिट गिन सकते हो या परक्विजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप फाइनेंस मिनिस्टर का जब आप ये जब उन्होंने जो स्पीच दी थी, एफएम की स्पीच से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या पकड़ना चाह रहे हैं, एजेंट्स को खाली पकड़ना चाह रहे हैं कि क्या?
इनका कहना था कि वो एजेंट को पकड़ना है, लेकिन जब इन्होंने अपनी ये 194 आर लेके आए, उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाल दी है, बहुत सारी चीजें डाल दी। और इसके बाद में 2 सर्कुलर भी निकाले, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, बट उन 2 सर्कुलर से डिफिकल्टीज बढ़ी है, रिमूव नहीं हुई। ठीक है, तो ये उसका 194 आर का जो जब जुलाई 2022 में जब आया था, तो उसका ये एप्लीकेबिलिटी थी, एंड टू whom इट इज एप्लीकेबल एंड टू whom इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, देन 20,000 से ऊपर परक्यूजिट है तो एप्लीकेबल होता है, 20,000 से नीचे है तो एप्लीकेबल नहीं है। एंड सर्कुलर नंबर 12, यदि मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, ये ऑन 16 जून 2022 सर्कुलर नंबर 12 आया था, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। इन दैट रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, इसमें नहीं दिख रहा, शेयरिंग बंद कर दीजिए, वापस पूरा स्क्रीन शेयर। वही किया है, कम से कम करके तो क्या। स्क्रीन शेयर 16 June 2022, this circular has came for removal of difficulties. In that, there is a question in the form of question answer they had given. First था कि you need not to check whether the amount is taxable in the hand of recipient. ठीक है, तो अभी अपने लोग सोचते हैं कि वो सामने वाले को टैक्स आएगा, टैक्सेबल नहीं है तो मुझे क्यों टीडीएस काटना है। इट इज नॉट देयर, सामने वाले को टैक्स हो नहीं हो, अपने को टीडीएस काटना है, तो ये अपने देखना ही नहीं है। अभी सर आया ये सुप्रीम कोर्ट वाला, मैं उसके लिए देना है इनको, आई एम नॉट अवेयर। No, it is not binding on, it is binding on the department. And there are judgment of Supreme Court that if the party that is directive is not liable to pay tax on it, there is no need to deduct TDS as a defector. That is my opinion. There are Supreme judges that I forget that judgment, but I will let you know. There is a judgment that if the taxpayer, it is beneficial to the taxpayer, then it is not applicable to the taxpayer. The ordinary circumstances, we have to deduct the TDS because in any case, we cannot go to the Kedia on the time. When the normal setting, that's circular, we should follow that circle. Then what it means. This in this first question, it is written that the deductors should not check the whether the benefit has been given or attributable to the recipient. So, like if you pay to the if you are paid to the third person and against then you are
benefit has been given to a third person. So whether we have to deduct for a third also or to both. You didn't get it? Like you have taken a immovable property, you have given rent on and someone else is staying. So benefit you have given to the agent so that you can stay there, and you are paying TDS, deducting TDS to the person to whom. So, but the benefit has been given to the someone. It becomes contingent on the person who is getting it changed. दो बार हो जाएगा TDS, तो वो दो बार आएगा कि नहीं बोलेंगे? दो बार आ जाएगा, दो बार आएगा। तो वो पिक्चर में तो दिखेगा नहीं कहीं पर भी, बट द बेनिफिट इज पिक्चर में ही नहीं दिखता वो। वही है ना, जैसे अभी एक इसमें क्वेश्चन ये भी है कि यदि जैसे किसी ने कार दी, अभी वो कार आपको बुक्स में लेनी पड़ेगी क्या? उस पे 194 आर के हिसाब से TDS तो डिडक्ट हो जाएगा, आपको 26 एस में भी दिख जाएगा, AIS में भी दिख जाएगा। अभी उस कार को आपको बुक्स में लेना पड़ेगा क्या? तो ये सब अभी डॉक्टर्स का है, डॉक्टर सैंपल्स पे आप TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो वेदर इट विल काउंट एज 44 AD इन टर्नओवर में आएगा, टर्नओवर में लेना पड़ेगा उसको, बट वो सेल तो नहीं कर रहा उसको, डॉक्टर उसको सेल नहीं कर रहा, उसको फ्री सैंपल मिल रहा है। डॉक्टर्स प्रोफेशनल फीस, डॉक्टर के केस में वो सिर्फ प्रोफेशनल फीस अर्न कर रहा है, तो उसमें आप स्टॉक कहाँ से लेके आओगे? Expenditure or purchase side का है, वो it's not a sale price, it's not the revenue receipt. सर अभी यदि आपके उस पर TDS डिडक्ट होके आ रहा है उस डॉक्टर का, AIS में दिख रहा है, तो आपको वो इनकम मिसमैच हो जाएगी ना। तो फीस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है ना, फीस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, या फिर वो फ्री सैंपल वो अंडर प्रिविलेज लोगों को ऐसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ 44 ADA क्या करेंगे? अभी वो फ्री सैंपल मिला है, उस पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि वो सब ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सामने भी, तभी भी उसको उसमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो TDS क्लेम हो जाएगा और इनकम में काउंट भी होगा। अलग से कॉलम है, you can show there. एग्जाम्प्ट इनकम है ही नहीं ना, ये एग्जाम्प्ट इनकम है ही नहीं। एकदम की हो गई ना। आप कौन सा सेक्शन में डालोगे? आप ये अच्छा एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है कि अपने को सबको आइडिया लगे कि उसको कैसे कर सकते हैं। यदि ऐसा आए तो हमको हमारी रिटर्न में कैसे दिखाना चाहिए, वी शुड ऑल शुड बी इन सेम पेज, कि सबका इसमें ओपिनियन मिले तो अच्छी बात है। लेकिन 44 ADA के केस में आप एक्सपेंसेस कहाँ बताओगे? वही टर्नओवर बढ़ जाएगा उसका उतने से। हाँ 50% पे फिर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ GST का भी इश्यू आ जाएगा। हाँ अंडर विच सेक्शन आप कौन से कॉलम में उसको भरोगे कि वो एग्जाम्प्ट है? आप यदि गिफ्ट भी दिखाते हो तो गिफ्ट भी नॉन रिलेटिव से आता है तो टैक्सेबल है। वही 50,000 से ऊपर नॉन रिलेटिव से रहेगा तो गिफ्ट वो भी टैक्सेबल है, तो आप उसको किसमें बताओगे? तो बहुत दुविधा है। CA की नहीं है सर, CA से ज्यादा क्लाइंट की है, हम उसको अपनी सुविधा समझ के रखते हैं। वही बोलते हैं हम अपने सिर पे ले लेते हैं कि हमारी सुविधा है।
एक्चुअली तो यही सॉल्यूशन के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम उसको क्या सॉल्यूशन दे सकेंगे ऐसे में। यदि वो हमसे पूछता है तो हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये एफएक्यू जो दिए हुए हैं उसमें एफएक्यू में 16 जून को 12 नंबर सर्कुलर में उन्होंने काफी सारी चीजें एफएक्यू में दी थी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह है या फर्नीचर फिक्चर डायरेक्टर को दिया है, देन ऑल्सो इट विल कम अंडर परक्विजिट सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, whether it is applicable on sale discount, cash discount. Yes. तो उसमें उन लोगों ने यही दिया था कि यदि आप इसमें एक ये भी उन्होंने दिया कि यदि आप 10 बॉक्स के साथ में 2 बॉक्स फ्री दे रहे हो, ठीक है, देन इट विल नॉट काउंट फॉर 194 आवर कि आपके वो 12 बॉक्स निकल रहे हैं तो वो सेल में ही निकल जाता है, वो अलग से डिस्काउंट नहीं माना जाता है। बट आप वो 10 बॉक्स के साथ कुछ बाहर से कुछ खरीद के लाके उसके साथ में फ्री दे रहे हो, देन इट विल कम इनटू 194 आवर। उसका खुद का स्टॉक दे रहे हो तो फिर नहीं आएगा 194 आवर। तो इसको आप लोग इस सर्कुलर को यदि अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होगी। बट इसके बाद में इसमें भी काफी सारी चीजें रह गई थी जो इन लोगों ने, जैसे इसमें एक कॉन्फ्रेंस वाला बहुत इम्पैक्ट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, डॉक्टर्स को और जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने क्या बोला है, कॉन्फ्रेंस वाला एफएक्यू में निकालती हूँ, ये वाला ही है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्फ्रेंस का जो है डीलर कॉन्फ्रेंस। अभी इसमें इन लोगों ने किया है कि यदि वो कॉन्फ्रेंस नए कोई प्रोडक्ट के लिए, एजुकेशन के लिए है तो 194 आवर एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज 194 एप्लीकेबल हो जाता है। एंड जितने लोगों के लिए आपने किया है उनमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा वो अमाउंट। अभी वो प्रैक्टिकली कहाँ तक पॉसिबल है, आप टिकट का पैसा तो आप कर दोगे, टिकट पर लोग इंडिविजुअल की रहेगी, होटल की बुकिंग भी आप रूम बुकिंग का भी कर सकते हो, बाकी के एक्सपेंसेस आप कैसे बाइफिकेट करोगे कि कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया, उसमें कितने पे टीडीएस डिडक्ट होना था, उसके अंदर लेना डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो लेकिन उसमें भी इन लोगों ने इसमें भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे डाले थे कि यदि सर्कुलर नंबर 12 में जो था कि यदि जिस दिन तक का कॉन्फ्रेंस है उस दिन तक का ही आपका एग्जाम्प्ट होगा, नेक्स्ट डे का जो है वो आपका 194 आवर में आ जाएगा। आपके खुद के लिए है तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली के लिए एक्सपेंस है तो वो 194 आवर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग वो आउट ऑफ साइट वगैरह जाते हैं और सब जाते हैं तो पूरी विथ फैमिली लेके जाते हैं। अभी मुझे इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, अभी जब मैं सपोज मैं एज ए ऑर्गेनाइजर या एज ए बिजनेस मैंने किसी इवेंट वाले को दे दिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने वो इवेंट वाले को जब कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन दैट, तो मैंने वो एक बार तो उस पर टीडीएस काट ही दिया, देन अगेन मुझे उस पर दोबारा भी टीडीएस काटना पड़ेगा 194 आवर में, एक एक इम्प्लॉय का अलग अलग से निकाल के, नॉट एम्प्लॉय मतलब एजेंट का, तो सेम अमाउंट पे 2 बार टीडीएस कटेगा। करते हो तभी भी 194 क्यों में टीडीएस परचेज करके वो इंसेंटिव के रूप में दे रहे हो, फिर वापस टीडीएस कटेगा। बात का लगता है वो आपको एक्चुअली उसको बेनिफिट मिला इनकम उसी की है, उसी का टीडीएस होगा तो वो रिपोर्टिंग में आ जाएगा। लेकिन अभी ये 2 जगह आ जाएगा ना सर रिपोर्टिंग में, सेम चीज सेम एक्सपेंस 2 जगह रिपोर्टिंग में जाएगा, 2 जन को अपनी इनकम में बताना पड़ेगा। शुरू में आपका एक्सपेंस हुआ और बाद में उसका इनकम भी होगा।
लेकिन मेरे को वही बुक्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि बुक्स में किस हिसाब से डालेंगे उसको, बुक्स में कैसे डालेंगे आप उसको। आपने डीलर को आपने जो अपने एजेंट इसको इवेंट वाले को पेमेंट किया उसमें तो उसके पेमेंट में से आपने टीडीएस डिडक्ट करके डाल दिया, बट जब आप एजेंट के में डालेंगे तो क्या क्या बोल कैसे डालेंगे, क्या एक्सरसाइज करेंगे। You have to pay him anything. अगर आपको उसको कुछ पेमेंट करना ही है, तो you have to deduct from that payment. You have to put the JV in your books of accounts. And if you don't have to pay, for example, then you have to claim it as your expense. इसके लिए ना इन लोगों ने जब और बिजनेस वालों ने उनके पास में रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये बहुत मुश्किल है। अभी 100 लोगों ने अटेंड किया कि 150 ने किया कि 200 ने किया। अभी हमने किया था 200 लोगों का, बट 100 ही लोगों ने किया अटेंड। देन क्या 200 में डिवाइड होगा? तो but if the room is booked in your name, sir, and you have not attended, but we had booked it in your name, na room. So it's my expenses to you, but you had not if you on you if you are not taken this benefit, it's your loss. Your view is that if the thing was offered, you opted not to use it. But still it was offered. Yeah. वो इसमें क्लियर नहीं है सर। देन ऑल्सो इट्स माई एक्सपेंस ना। अभी वो रूम वाला तो रेंट वापस नहीं करेगा ना, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का तो लग गया ना, मैंने आपको दे दिया, अभी आपने नहीं लिया वो आपकी मर्जी है। हाँ, ये सब प्रॉब्लम आने वाली है, उसी के लिए ही बिजनेस वालों ने उनको दिया रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत मुश्किल है निकालना, तो वो इन्होंने जो सर्कुलर नया सर्कुलर जो लेके आए सर उसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। एक्चुअली मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, वो सुझाव देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, सितंबर वाला जो है, सितंबर वाले में उन्होंने क्या दिया है ना। हाँ, ये पैराग्राफ पढ़िए। In order to remove these practical difficulties, it is clarified that if benefit perquisite is provided in a group activity in a manner that it is difficult to match such benefit perquisite to each participant using a reasonable allocation key, the benefit perquisite provider may at his option not claim the expense. वही बोल रही हूँ ना। Representing such benefit perquisite as deductible expenditure for calculating his total income. If he decided to opt so, he will not require to deduct TDS under section 194R on such benefit for perquisite, and therefore he will not be treated as SSC in default under section 201 of the Act. Thus, in such a case, he must add back the expenditure representing such benefit of perquisite to calculate his total income if such expenditure is debited in this account. TDS is not 30% is disallowed. 5 to 8 the whole. तो यही एक डिफिकल्टीज है ना यहाँ पर। अभी ये बोलता है पूरा आप एड बैक कर दो एक्सपेंसेस को, और उधर में हमारे यदि टीडीएस नहीं डिडक्ट करते तो 30% का डिडक्शन है। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि फिर हम कौन से एक्सपेंसेस को करेंगे, ऐड करेंगे, समझे।
अभी मेरा प्रॉब्लम समझे कि कहाँ आ गए। There is one more. नहीं सर, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे इन्होंने अभी क्लियर किया ना वो चीज, मैं जो पूछना चाह रही थी कि आप किसको एड बैक करोगे। आपका एक्सपेंसेस आपने यदि एजेंट के थ्रू किया है या इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू किया है, ठीक है, उस पे मैंने उस एक्सपेंसेस पे मैंने टीडीएस काट दिया है। अभी ये जो मेरे को टीडीएस काटना था वो काटना था जो इम्प्लॉय को पर मिलेंगे उसके ऊपर, तो वो तो मेरी अकाउंट्स में डेबिट ही नहीं किया मैंने, वो तो मेरे अकाउंट में डेबिट ही नहीं है, तो मैं एड बैक किसको करूंगी। क्योंकि एक एक्सपेंसेस पे तो मैं काट चुकी ऑलरेडी। तो इसलिए मतलब मुझे जो एक इसमें माइनर पॉइंट ये समझ में आया कि ऐसा कुछ रहे कि हम कॉन्फ्रेंस या ऐसा ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो इवेंट वाले के थ्रू करो, वो ज्यादा बेटर। कि आपने उस पे 2% टीडीएस काट लिया, आपका वहां पर खत्म। आपने यदि उसमें नहीं भी फिर काटा तो किसको एड बैक करोगे। जो मुझे लग रहा है, हो सकता है माई व्यू इज नॉट करेक्ट। बोलिए सर। लेकिन सर आप एड बैक किसको करोगे, आप मुझे ये बताओ ना। या ये तो बोल ही रहे हैं ना कि यदि आप नहीं उसमें डिवाइड कर पा रहे हो देन यू हैव टू एड बैक। यदि मैं डिवाइड कर ही पाऊंगी तो मैं टीडीएस डिडक्ट कर ही दूंगी ना। यदि मेरे को मैं डिवाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कितने लोगों में करना है, इन दैट केस इट इज एड बैक। सर यदि मेरे पास यदि वो डेटा मिलेगा तो मैं उस हिसाब से फिर डिडक्ट करके उन लोग का ही डिडक्ट कर दूंगी ना। मैं क्यों एड बैक करने जाऊंगी अपने उसमें। Okay, suppose you have not turned up. So for two you disallow. And for each you allow and deduct the TDS accordingly. For individual persons who have attended. Beneficiary. ये सर कंफ्यूजन तो है काफी इसमें। सर तो आप माइक दीजिए इनको। उनको सर को दो। नहीं सर, सबको क्लियर हो जाएगा ना, आप जो बता रहे हो वो चीज सबको क्लियर हो जाएगी, इसीलिए बोल रही हूँ, सबको सुन जाएगा। Same principle applies over here. When you send the invitations, you might have sent the invitations for 20 people. 18 might have attended. Who have not attended, who have not opted for obtaining the benefit. They cannot be subjected to TDS or the benefit which they are not. So for those two, you add back the expenditure. That's all. So simple. Yes. Invite करते हैं तो you send the invitations. सर लेकिन हाँ So you have everything having. But this is open to public. This is not made for agents only. But this section meant for yes, for everybody who gets the benefit. एक्टिविटी It's for agents. It's a mirror image of 2024. It's only the benefit given in cash or in kind to your business associate. Yes, correct. नो कैश इज आल्सो कवर्ड। Not in this section. Not in this section. 194R में अभी वही मैं बताने वाली थी आपको। अभी जो नया चेंजेज आया उसमें कैश को भी इंक्लूड कर दिया है। अभी जो फाइनेंस एक्ट 2023 में कैश इंक्लूड हो गया है। कोई सुविधा नहीं है कैश के लिए because cash is not going out of your hands. You are not just going out the cash. आपने जो कुछ भी मटेरियल लिया है वो यूजेबल नहीं है, that is okay. But cash anyway you are not giving. So you can explain. Yes. It is only to catch hold of those people who got benefit in kind, which they were not reporting. The whole purpose is that. For absentees, cash is not given. It was some question as part of this.
The cash will go in terms of cash, coupon discounts and all that. We have given the whole contract to an event manager as per your requirement. How much income I have to add back? Sir, or madam can like 100 रुपया मैंने इवेंट मैनेजर 1 लाख रुपया इवेंट मैनेजर को दिया है, मैंने 194C नहीं काटा, 194R भी नहीं काटा, मुझे 2 लाख ऐड करना है कि 1 लाख ऐड? 1 लाख ही होगा ना। तो सर के हिसाब से तो 1.5 होना चाहिए। Think on it. दोनों करने हैं सर। 30% for 194C. But my addition cannot be more than expenditure. That is what. Government has fixed the section in the manner. Then you have to go by 20%. So food for thought. Can we? That is what the courts are waiting for. Yeah. Full contract. And the reimbursement part in that case. Reimbursement है तो bill आप प्योर एजेंट वाला कंसेप्ट होता है ना सर उसमें. It's the bifurcation. Then also it's a pure agent concept, sir. If the bill is in your name, then you don't have to deduct TDS. But if the bill is not in your name, in the name of event manager or in anyone else, and they want to reimburse from you, then you have to deduct TDS. Like our professional fees bill. हम लोग भी हमारा जो प्रोफेशनल फीस का बिल देते हैं उसमें यदि आउट ऑफ पॉकेट रहता है, देन पर्सन हैज टू आवर क्लाइंट हैज टू डिडक्ट 194J on full amount. And if we are residing in any hotel or we got the bill in the name of our client, then TDS not applicable on 194J. When Ahmedabad council member comes to move for meetings and all, but is it embedded to that person? ये सर उसमें ये ऑफिशियल वर्क है ना, ये तो पर्क नहीं हुआ ना. ये आप इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है. आप आउट ऑफ पॉकेट वाले में जो 194R में भी आप देखो ना, उसमें लिखा हुआ है यदि आप अपने प्रोफेशन आप बिजनेस और के वर्क के लिए जा रहे हो ना, देन इट इज नॉट पर्किंग. बट सर ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के हिसाब में, कि यदि आप बिजनेस वर्क के लिए जा रहे हो देन इट विल नॉट बी डिडक्टेड ऑन 194R. इट इज नॉट पर्क. यदि आप खुद के लिए जा रहे हो या जैसे हाँ तो आना चाहिए, 2 दिन एडिशनल पे आना चाहिए, वो 2 दिन पे नहीं आना चाहिए. इसमें भी उन लोगों ने एक ये डाला है सितंबर वाले सर्कुलर में क्लियर किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे रात को वो खत्म हो गया लेकिन हमारी उस दिन फ्लाइट ही नहीं है या कोई ट्रेन या कुछ भी नहीं है, हम सेकेंड डे जा रहे हैं, तो उस दिन का रात का होटल का रेंट का वो पर्क में नहीं आएगा, वो 194R उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो वो उन्होंने उसमें सितंबर वाले सर्कुलर में क्लियर किया है कि यदि आपका ऐसा कंडीशन मतलब वो सिचुएशन ऐसी है कि आप उस दिन नहीं निकल पा रहे हो तो उसका आपको 194R मिल जाएगा. तो इसमें भी डुप्लीकेसी बहुत है. सर उसके ऊपर तो मैंने कई सेशन लिए थे, उस समय बहुत सारे सेशन लिए थे, वीवीएन टेबुलर फॉर्म में पूरा प्रैक्टिकली पूरा समझाया था. और उसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि टीसीएस नहीं काटना है, पहले टीडीएस काटेंगे, पहले सबसे पहले टीडीएस काटना है. आप यदि उसमें दोनों सेक्शन आप समझो, 206 टीसीएस कभी होता है और टीडीएस कभी एप्लीकेबल होता है और टीसीएस कब एप्लीकेबल होता है. टीडीएस में क्या फॉर्मूला है, आप क्रेडिट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर,
ठीक है। और टीसीएस में क्या फार्मूला है, ऑन रिसीट बेसिस। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बिल कब बना के दिया या आपका पेमेंट कभी आया, वो पूरा प्योरली वो रिसीट बेसिस पे टीसीएस। और टीडीएस है रिसीट क्रेडिट और अमाउंट रिसीट विच एवर इज जनरेटेड। ओके, तो सब जगह वैसा ही चल रहा है, डबल आप बोल रहे हैं प्रैक्टिकली वैसा ही हो रहा है, बट जब हम बिल इश्यू करके देंगे उस समय तो मेरे पास पेमेंट नहीं आया है, हाउ कैन आई ऐड टीसीएस इन माय बिल, सवाल ही नहीं है। They are deducting टीडीएस और टीसीएस एडवांस पे कैसे टीसीएस करेगा, एडवांस तो सामने वाला दे रहा है ना, आप पूरा वो ट्रांजेक्शन समझिए, आप मुझे एडवांस दोगे तो मेरे बुक्स में तो बाद में एंट्री आएगी, मैं टीसीएस कैसे काटूंगी, आप टीडीएस काट के मुझे पेमेंट करोगे। TDS only. यस टीडीएस, तो मेरा कहना है कि 194 में भी TDS कट रहा है और 194 C में भी कट रहा है और दोनों और डबल रिफ्लेक्ट हो 194 सी में क्यों कटेगा, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया क्या ओवरलैपिंग किया परचेज। Yeah, if I am a service provider, I provide to say one company. That company is deducting 194C only, and when its turnover is exceeding 50 lakhs, that time 0.1% 194Q also. So, नहीं होना नहीं चाहिए। भी करता है तो 194 हाँ वो नहीं No, there is no precaution. 194Q applies only for goods, not for service. It is very clear. Error ही है. This is error. This is not precaution. इसीलिए मैंने पूछा कि वो सर्विसेज पे है ही नहीं, वो गुड्स पे ही है 194 की। Probably there will be some element of composite, you know. Doesn't matter. If you take classified as 194, तो goods है ही नहीं. है ही नहीं। ये थोड़े टेबल बना के दिए थे 194 कभी अब कब किसको क्या एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को एप्लीकेबल है, क्या बताइए। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इट टर्नओवर इफ मोर देन 1 करोड़ देन इट इज एप्लीकेबल। सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल 21-22 में 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर था, एंड 22-23 में 2 करोड़ का टर्नओवर हो गया, 2 करोड़ के आसपास है। एंड बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज 20,000, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज 21-22 में 1 करोड़ से नीचे था। AOP, BOI and company methods other than individual and HUF, same scenario है, but it will be applicable because deductor is other than individual and HUF, so limit 1 करोड़ की नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में यदि वो डिडक्टी इंडिविजुअल है देन ऑल्सो 18,000 का ही पर्क है, तो एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज 20,000 क्रॉस नहीं हुआ है। इंडिविजुअल यदि प्रोफेशनल है, ओके, इन केस ऑफ प्रोफेशनल लिमिट इज 50 lakhs, तो 51 लाख का टर्नओवर है 21-22 में, 22-23 में 1 करोड़ का है एंड बेनिफिट इज 25,000, देन इट विल बी एप्लीकेबल। और कितने पे एप्लीकेबल होगा, कितने पे एप्लीकेबल होगा, 25,000 का पर्क है, कितने पे एप्लीकेबल होगा, 5,000 पे, एक्सीडिंग 20,000। पार्टनरशिप फर्म में नॉट एप्लीकेबल बिकॉज डिडक्टी इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो डिडक्टी यदि रेसिडेंट है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है, डिडक्टी यदि नॉन रेसिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल इन बिजनेस एंड डिडक्टेड कंपनी एंड बेनिफिट ऑफ पर्क इज ऑफ 25,000 और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, एप्लीकेबल बिकॉज लास्ट ईयर 1.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ। In case of other than individual, it is not applicable because benefit is only up to 20,000. तो 20,000 के ऊपर जाएगा तो ही है। Then in case of partnership firm, if in deductee is individual employee है individual तो भी applicable नहीं होगा क्योंकि employee employer का relation है उसमें, इसलिए 194 applicable नहीं है।
192 में चला जाएगा वो। इंडिविजुअल यदि प्रोफेशनल है एंड डिडक्टिव लिमिटेड LLP, देन 21-22 में उसकी टर्नओवर कुछ भी नहीं है, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज लास्ट ईयर टर्नओवर कुछ भी नहीं थी, तो 22-23 में 194 आर एप्लीकेबल नहीं है। तो समरी में ये है कि टर्नओवर लिमिट वी हैव टू चेक फर्स्ट कि जब हम 22-23 के ऑडिट कर रहे हैं तो वी हैव टू चेक 21-22 का टर्नओवर, और दिस ईयर इफ वी हैव टू गाइड वी हैव टू चेक द टर्नओवर ऑफ 22-23। if the turnover वो एक्सीड कर रहा है लिमिट से, देन तभी ये 194 आर का एप्लीकेबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अभी ये कैसे थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे निकालना है, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ये थ्रेशोल्ड लिमिट निकालने के लिए भी कि 30 जून तक 8000 है, 30 जून के बाद 12000 है, TDS नहीं डिडक्ट होगा क्योंकि दोनों मिला के 20,000 ही हो रहा है। बिफोर 30 जून 25,000 था, और आफ्टर 30 जून कुछ भी नहीं है तो नहीं होगा क्योंकि वो 30 जून के बाद का नहीं ले रहा। बिफोर 30 जून 1,25,000 हो गया था, बट आफ्टर 30 जून ओनली 10 रुपीज है, तो वो 10 रुपीज पे भी लग जाएगा। बिफोर 30 जून 2 लाख है, एंड आफ्टर 30 जून इट इज 2 लाख, देन 2 लाख पे लगेगा क्योंकि वो 20,000 की लिमिट आपकी 30 जून के पहले खत्म हो गई 20,000 की, तो 1,80,000 पे नहीं लगेगा, पूरे 2 लाख पे लगेगा। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल 30 जून के पहले 10,000 है और बाद में 2 लाख हुआ है, तो 1,90,000 पे लगेगा क्योंकि 20,000 की लिमिट आपको एडजस्ट करनी है, तो 10,000 पहले हुई, 10,000 अब बाद वाले में हो गई। एंड फॉर लास्ट एग्जाम्पल 30 जून के पहले कुछ नहीं था, 30 जून के बाद में 1 लाख है, तो 80,000 के ऊपर आपका 194 आ आएगा। ओके, तो ये कैसे थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करना है वो हो गया। 1/4/2023 में जो चेंज आया, जो मैं बता रही हूँ कि कैश उसमें जोड़ दिया है, तो फर्स्ट उन्होंने एडिशन किया एक्सप्लेनेशन में कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मीन्स द पर्सन providing such benefit or perk, or in case of company the company itself including the principal officer thereof। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी के ऊपर भी आ गया है, तो कंपाउंडिंग यदि लगेगी तो उसको भी लगेगी। 194 उसमें इंक्लूड किया है, पहले नहीं था ये। फिर for the removal of doubt it is clarified that the provision of subsection 1 shall apply to any benefit or perk whether in cash or in kind or partly in cash। तो पहले कैश एलिमेंट नहीं दिया हुआ था, अभी उन लोगों ने उसमें सेक्शन में ऐड कर दिया ये भी कैश एलिमेंट पे भी आपको पर्क है वो 194 आर लगेगा। तो ये दो नया चेंज इसमें 194 आर में आया है। 194 सॉरी ये 4 नहीं 196 ए है, टाइपिंग एरर हो गया। 196 ए बेनिफिट ऑफ टैक्स ट्रीटी। पहले म्यूचुअल फंड नॉन रेसिडेंट सब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में काफी इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पे TDS डिडक्ट होता है 20%। ओके, नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट दे आर प्रोवाइडिंग if they are investing in mutual fund and the DTA provision is there, section 90 or section 90A in agreement is there, then they can apply for lower deduction or nil deduction. Okay, and if the agreement is there and they have tax residency certificate of that country। ठीक है, क्या तो ये पहले नहीं था, म्यूचुअल फंड का उनका 20% पूरा डिडक्ट हो जाता था, कट हो जाता था, तो अब नाउ दे आर गिविंग देयर बेनिफिट कि ये आप कर सकते हो। वेलकम सर। तो ये एक नया अपने लोगों को काम मिल सकता है यदि ज्यादा होगा अमाउंट तो। TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस 30 जून को एक सर्कुलर आया था, 30 जून के पहले तो मई में आया था कि 206(1)(c)(1)(g) में LRS के ऊपर हम लोगों ने परसेंटेज चेंज किए थे और थ्रेशोल्ड लिमिट भी चेंज की थी। आफ्टर दैट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस थे, कोई भी सेक्शन पहले आता है उसमें रहते ही है, बट बाद में उन्होंने उसको रिमूव करने के लिए सर्कुलर निकाला
वो सर्कुलर में भी कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि रिमूव नहीं होती डिफिकल्टी रिमूव हो जाएगी तो उनका काम बंद हो जाएगा, लिटिगेशन का काम बंद हो जाएगा। तो what they had mentioned in that circular, in the case of overseas tour package, the TCS rate will be 5% up to rupees 7 lakh, and post which it will be 20%. In case of LRS abroad, TCS up to 7 lakh, no TDS and TCS, and after that it would be 20%. तो ये सब चेंजेस ना इन्होंने जब शुरू में जो लाए थे वो थ्रेशोल्ड लिमिट भी अलग थी, परसेंटेज भी अलग थे। अभी 30 जून वाले सर्कुलर के हिसाब से चलेंगे तो ये नया रेट है, नया थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो आपको कभी भी ये देखना है तो आप 30 जून वाला सर्कुलर देखना। 30 जून वाला सर्कुलर यदि आप बोलोगे तो मैं आपको एक बार यहाँ भी दिखा सकती हूँ कि उसमें बहुत मतलब काफी अच्छी चीजें भी दी हुई है उसमें। हाँ, 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल है वो। 30 सितंबर तक पुराना ही है, 30 सितंबर के बाद में, क्योंकि ये सब चेंजेस अभी उन्होंने 30 जून को दिए तो ये नहीं हो सकते थे। तो ये सर्कुलर उन्होंने 30 जून का सर्कुलर दिया है। इसमें अच्छी बात क्या दी है इन्होंने कि अर्लियर क्या रेट होना चाहिए, अभी क्या रेट होना चाहिए, वो सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि 30 सितंबर तक क्या रेट रहेगी और 30 सितंबर के बाद क्या रेट रहेगी, वो पूरी अच्छे से डिटेल में दी हुई है। ठीक है, तो ये आप ये सर्कुलर आप कभी भी आपको ये TCS का LRS का देखना है ना, आप ये सर्कुलर फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। पिछला आप देखो ही मत, इस सर्कुलर के हिसाब से ही देखना आप। ठीक है। तो दिस इज द रेट कि 30 सितंबर तक नील है 7 लाख पे, और ये ऊपर वाला सेम है एजुकेशन लोन वाला। चेंज कहाँ पर हुआ है अपने को, चेंज हुआ है एकदम लास्ट वाले में, परचेज ऑफ OTT, परचेज ऑफ OTPP 5% विदाउट थ्रेशोल्ड, और 1 अक्टूबर से 5% टिल 7 लाख, एंड आफ्टर दैट इज 20%। ठीक है, तो 30 सितंबर तक कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 5% का डिडक्ट करना था। 30 सितंबर के बाद में इन लोगों ने 7 लाख की लिमिट दे दी, 7 लाख तक 5% है, उसके बाद 20% है। उसमें उन्होंने पहले एजुकेशनल के लिए या ट्रिप के लिए हम लोग रेमिटेंस करते थे तो कोड एक दूसरे से पूछते रहते थे कौन से कोड में डालें। अभी उन लोगों ने पर्पज कोड स्पेसिफाई कर दिया है कि किस पर्पज कोड में आपको डालना है, तो आपका परसेंटेज का वो डिफॉल्ट नहीं आएगा। तो वो पर्पज कोड भी सर्कुलर में दिया हुआ है उन लोगों ने। एक ये भी एक क्लियरिटी उन्होंने दी कि OTPP इसके ऊपर मतलब द पैकेज शुड इंक्लूड एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, और वो 3 आइटम में से 2 आइटम होंगे तो ही OTPP माना जाएगा। मींस इंटरनेशनल टिकट, होटल एकोमोडेशन और एनी अदर एक्सपेंडिचर इन द नेचर। हम कहीं भी घूमने जाएंगे तो ये 3 एक्सपेंस तो होने ही है ना, और इन 3 में से यदि 2 होते हैं तो ही वो OTPP में आएगा। यदि कोई एक है, खाली मैंने इंटरनेशनल टिकट बुक करके रख दी, देन इट विल नॉट कम इनटू द OTPP। ठीक है, तो दोनों में से कोई, तीनों में से कोई 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही वो OTPP में आएगा, उससे के हिसाब से प्रीव्यू TCS के प्रीव्यू से निकल जाएगा। एंड उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि फॉरेक्स कार्ड पे भी और इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड पे नहीं लगेगा, LRS में नहीं आता फॉरेक्स कार्ड, और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने होल्ड पे रख दिया है अभी टिल फर्दर क्लेरिफिकेशन। पहले 30 मई तक का जो पहले जो उन लोगों ने लेके आया था सर्कुलर, उसमें था इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को इंक्लूड किया था, बट रिप्रेजेंटेशन गए होंगे या जो भी इंटरनली जो भी रहा हो तो उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिसीजन होल्ड पे रखा है। तो टिल फर्दर क्लेरिफिकेशन इंटरनेशनल या TCS नहीं आएगा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, अभी ये सब थोड़े की इश्यूज है कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि बिजनेस एक्सपेंसेज है कि पर्सनल एक्सपेंसेज है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेज को ही उन्होंने TCS में लिया है, बिजनेस को नहीं लिया है। फॉरेन करेंसी में यदि हम यहाँ से सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं तो उस पर TCS आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये सब थोड़े की इश्यूज है जो क्लेरिफिकेशन अवेटेड फॉर दैट। प्रोसीजरल अमेंडमेंट में 2 अमेंडमेंट है। एक तो ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का है कि उन लोगों ने उसमें पेंशन और उसको इंक्लूड कर दिया है,
एंड बट 194R और 194Q अभी भी नहीं इंक्लूड किया है लोअर डिडक्शन के लिए। एंड ये एक अच्छा वेलकम चेंज है कि यदि आपने अपना एक्रूअल बेसिस पे इनकम दिखाई है और सामने वाला पेमेंट बेसिस पे टीडीएस काटता है, तो सपोज 22-23 में आपने इनकम दिखा दी, आपने बिल इश्यू कर दिया 22-23 में इनकम दिखा दी, सामने वाले ने पेमेंट इस साल किया, तो वो टीडीएस इस साल काटेगा। तो आपकी इनकम के टाइम में आपका टीडीएस नहीं है और आपका जिस समय टीडीएस कटा है उस समय आपने इनकम नहीं दिखाई हुई है, तो वो टीडीएस के लिए फिर प्रॉब्लम आती थी कि कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये चेंजेस दिए कि जिस ईयर में डिडक्ट हुआ उसके 2 साल तक यू कैन क्लेम दैट टीडीएस। आगे 2 साल, पहले कैसे क्लेम करोगे? तो income is some financial year 22-23 on accrual basis. Hmm. The fear of my income, so for him it is expenditure. वो कैश बेसिस पे अगले साल की तो आप इस साल कर लो ना, वो यही तो बोले 2 साल तक आप क्लेम कर सकते हो। बट अभी वो एक अभी भी रह गया कि हमने पिछले साल टीडीएस कटा हुआ है और हम इनकम इस साल दिखा रहे हैं, रिवर्स वाला। वो कैरी फॉरवर्ड में हम डाल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड में मिल जा रहा है वो। हाँ, तो ये एक वेलकम चेंज था कि ये इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं थी कि हमने इनकम पहले दिखाई है, टीडीएस बाद में कटा है, तो उसका क्या? क्योंकि स्टिल यू कैन क्लेम। ये एक 28 जून को सर्कुलर आया कि ड्यू डेट बदल गई है इस साल के लिए, Q1 के लिए, बिकॉज दे हैव टू मेक द चेंजेस इन देयर वेबसाइट, इन देयर रिटर्न, इन देयर XML या, तो उन लोगों ने उसके लिए वो डेट एक्सटेंड कर दी है। तो इट वाज अर्ली, इट वाज 1 जुलाई to 30 जुलाई, now it's you can file from 1 September to 30 September, and it is advisable not to file right now, क्योंकि वो आप ओल्ड उसमें डालोगे तो कुछ ना कुछ वो प्रोसेसिंग के टाइम में प्रॉब्लम करके देगा। तो यदि आपके पास रेडी है भी Q1, देन ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू फाइल राइट नाउ, वेट फॉर 1 September, आफ्टर दे विल रिलीज न्यू थिंग्स, न्यू सॉफ्टवेयर और न्यू पैकेज और वॉट एवर दे वांट टू इश्यू रिलीज, देन यू हैव टू फाइल दैट। ओके, अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना सर, हाथ से निकल गई बोल। वो तब वेट कीजिए उनका रिप्लाई का, उनका वो बैट मारेंगे उसके बाद। आपने बॉल फेंक दी। 24 क्यू की डेट नहीं चेंज की। उन्होंने देखिए लिखा है नीचे है ना, 27 क्यू 27 EQ सब चेंज कर दिया उन्होंने। खाली 24 क्यू के लिए 31 जुलाई है। सैलरी रिटर्न में क्योंकि कुछ चेंज नहीं है, इसके लिए सैलरी रिटर्न आपको टाइम पे 31 जुलाई फाइल करनी है। अदर देन सैलरी रिटर्न 1 सितंबर के बाद फाइल कीजिए, तब तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे ध्यान दीजिए। रेडी करके रखिए ना, ठीक है। CSI फाइल अभी 2 जगह से डाउनलोड होती है, NSDL से भी और इनकम टैक्स की साइट से भी। तो बिफोर 1 जुलाई 2022 NSDL साइट, आफ्टर 1 जुलाई 2022 इनकम टैक्स साइट। ओके, और चालान ये एक अच्छा हुआ है कि NSDL से हम चालान डाउनलोड नहीं कर पाते थे। यदि हमने डाउनलोड नहीं किया भरने के टाइम में तो हमें बहुत दिक्कत, मिलता ही नहीं था चालान। कोई कोई बैंक तो दे देता था, कोई कोई बैंक नहीं देता था चालान। अभी ये एक अच्छा चेंजेस है कि E-फाइलिंग साइट से आप 1 साल तक वो चालान डाउनलोड कर सकते हो, वो वहां पर दिखता है। जैसे आपका एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स का दिखता है वैसे ये भी दिखता है। तो ये एक अच्छा वेलकम चेंज है कि आपको मिल जाता है चालान 1 साल तक। ओके, thank you for patient hearing, and hope I can cover all the things what is required for our audit and for this year. And I appeal all to go for blood donation. आप नाश्ता करके भी जा सकते हो। नाश्ता करके ही जाना चाहिए एक्चुअली। खाता मिलेगा? अरे आके इधर दिखाओ, इधर दिखाओ।
ये देके आए हैं एंड ही इज रेगुलर डोनर। हर 3 महीने में ये डोनेट करते, प्लाज्मा भी करते हो ना, प्लेटलेट डोनेट करते हैं ये। हाँ बोलो ना, प्लेटलेट्स के बारे में आप बताओ। प्लेटलेट I just tell you something more about platelets donation. Blood you can donate only once in 3 months. So after 3 months you can give bloods. But platelet donation is possible after every 15 days. So please, those who are healthy, start this process. It will improve your health. दूसरे का तो health अच्छा होगा, आपका health भी अच्छा होगा. So please try to do that. Platelets is very, very relevant for people with blood cancer, those who get low platelets due to dengue. So platelets is something, it's much needed. Blood donation का awareness है, platelets का donation कम है. So anybody who is healthy, please start that also. It will be very helpful for this. Thank you. Thank you, Pinki ji, for the very informative and detailed session on TDS. I would like to invite Vijita Jaiswal ji to propose a formal vote of thanks to Pinki ji on our behalf. Also, we have with us Dr. Mukesh Gupta, who will be giving us a small health talk to make us aware about our health, and also he will be telling us how to age gracefully. So I welcome him and I call upon Vijita ji. Thank you, Purvi. So a very famous speaker, Bill Murray, he said that whatever you do, you should give your 100%, except when you're donating blood. So at JB Nagar, we believe in doing that, giving 100% in whatever we do. So, and Pinki has been doing that, and she's been recognized by our institute, and she's an RCM. Hopefully, she'll travel more further. And thank you, Pinki, for giving us. Of course, I wasn't here to sit and listen. So I request everybody to carry a round of applause. एक एस्पेक्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो टीडीएस का इन्होंने समझाया, लेकिन हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट टीडीएस का है, यू शुड रिड्यूस टोबैको, रिड्यूस ड्रिंकिंग एंड रिड्यूस स्मोकिंग फ्रॉम लाइफ, एल्स दे विल रिड्यूस योर लाइफ, राइट? सो टीडीएस का आज दोनों एस्पेक्ट कवर हो रहा है, and we are really fortunate to have Dr. Mukesh Gupta with us. He's a obstetrician and a gynecologist, and he has his hospital Lenest in Malad. He's the past president of the Association of Medical Consultants. He's the trustee, past president of Association of Fellow Gynecologists, and past editor of GRASP AMC Mumbai. He has been awarded many accolades, like the winner of Emerging Star of Medicine by the Indian Medical Association, Young Achievers Award, Excellence in Healthcare, Young Achievers Award in the Children's Academy Group of Schools. He is the core committee member of Mindspace ALM and also been a past president of Lions Club of Malad Borivali. And he is the chairperson of Media and Communication Cell, Secretary, Malad Medical Association. He has a successful YouTube channel with more than 43 million views. YouTube channel का link बता देना मैं, Mukesh. And he is featured in various news and health channels in print, TV, and CNA Asia. So please welcome Dr. Mukesh. And to honor him formally, I call upon Seema, a past convener, and also our RCM Pinki.
Thank you. Well, good morning, all of you. I'm Dr. Kedia, gynecologist, stereologist. You know, nowadays, speaking also in English, we respond also in English. और गालियाँ भी इंग्लिश में देने लगे आपसे लेकिन यहाँ पर आके सर यार ये अपने लोग हैं अपने सारे लोग हैं इनके साथ में बैठ के हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं and it was a nice feeling it was good because normally whenever I go to a professional organization in mind you I have organized programs with your institute as well in the BKC auditorium for doctors and for CA because we celebrate our birthdays together. So when I was addressing the association medical consultant with good offices of Vijayta ji and Pinki ji and many other CAs who we know, we had actually tied up with the Chartered Accountant Association and the Medical Association and medical consultants. So AIMS is the largest body of consultants. We've got more than 16,000 consultants, postgraduate consultants, Mumbai, Thane, Mumbai, Raigad, Bangalore, Goa, etc., etc. And we actually do programs for postgraduates, not MBBS, not BHMS, not BAMS, but postgraduates. Right? आपकी बात में BCom वालों के लिए नहीं, सिर्फ CA वालों. So that is the kind of activity. Now let me start with, I don't want to waste a lot of your time because a lot of activity and academic pieces lined up for you. So I'm going to be talking about something which is not very routine for you. Aging gracefully. Now that was, Vijayta said, because you talk something nice which we will remember for a very long time. We know you into the talk and that is the question. Okay. Now I can see a lot of young people here. Okay, मैं तो बुढ़ा हूँ लेकिन आप भी young हो. So why are they interested in this? Why are you interested in listening? Aging gracefully. Age only more time. That's exactly the problem with doctors or your clients. When they say, अभी क्यों invest करना है, अभी क्यों save करना है, तो पूरी जिंदगी पड़ जाए कमाने के लिए और save करने के लिए. अभी क्यों मैं bother करूं मेरे financial freedom के लिए. अभी क्यों मैं bother करूं मेरे money bags and long term के लिए जो return policies है retirement solution. And then my chartered accountants or smart investors like you guys will advise me, Mukesh, बेवकूफ मत. सही समय पे मुझे पता नहीं था 8 months power of compounding. Last time when I had a talk with the chartered accountant doctor together, I had my lunch in your canteen in the ICAI का one जो है उधर एक माले पे canteen से सब हमने and I was sitting with Rachna Ranade करके एक लड़की थी chartered accountant थी and both of us being YouTubers थोड़ा सा लोगों ने हम दोनों को साथ में बैठा दिया ये medical का YouTuber है और तुम ये की YouTuber साथ में बैठो and Rachna and me were chatting and the whole discussion. Well, she was very focused about the business component of it. Of course, she's very sharp girl. I suddenly realized that there's lots to learn and think about your future financial plan. Oh, I'm also an IIM Calcutta alumni. I'm studying management at Calcutta. And I'm primarily a gynecologist first in university. But then उसके बाद वो कुछ भी होती है ना थोड़ी extra करने के लिए. I did my psychological counseling graduation. Because yeah, just by knowledge of what you know is not enough to convert into action. Right? India's time पे करना है. आप कर देंगे ना, आप manage कर लेना बाद में से. मतलब I have yet not understood the concept of why the cash flow cannot be maintained on daily basis. पर हमारे भाई बंधु नहीं maintain करते हैं. लास्ट में आपका कोई बंदा कुछ तो बना के दे देता है और हम उससे कहना ठीक है ले लो जैसा तू बोले वैसा. रिटर्न कितना दिखाना है is the starting question. So start from the reverse. मतलब ICU में कितने दिन भर्ती होना है उसके हिसाब से इलाज करेंगे. I'm going to back that agenda. I like the three mnemonic TDS and team which we were talking TDS. उसने पहले बोला कि हमें छोड़ना पड़ेगा tobacco, दारू और फिर ऐसे क्या बोलने वाली है मेरे धंधे पे काट मारेगी मैं gynecologist हूँ. लेकिन फिर उसने कुछ और बोला. I think I'm being recorded, so I'm not going to use the wrong words. ठीक हो जाता है. But having said that, let me start with the mnemonics of aging. And then we're talking about aging, the word says it all. मोदी ने सिखाया सब चीज word के साथ में जाते हैं तो लोगों को ज्यादा याद लगता है. And that is the reason why I'm going to be talking about aging. And when talking about aging, let's just understand it's not just about growing old, but I'm going to use a small mnemonic: acceptance,
acceptance, giving, education, invest, and immunization, never say never, and gratitude. I'm going to use the small emotion, but in the next 10 minutes, I'm going to use it quickly and help you to attain whatever desire that you have. Let's start with acceptance. Acceptance of the fact, एक चीज जो inevitable है. That is the only thing positive. Debt and taxes. Yes. Oh, yes, yes. So I used to, well, as a kid, I was very fascinated by that man. But बजट के बाद एक ही आदमी को एक ही बूढ़ा आदमी क्यों आगे बाहर करता है? Why? And then I realized over the years, this man is different and hence it's there, right? So let's talk about aging. And I'm going to use this word, conscious aging. Okay, so when I am gynecologist, in my clinic, government, जो मेरे पास deliver हुई, आज मैं yes, I have been practicing for more than 2 decades. तो मुझे मालूम है, but when those patients come back to me, doctor, excuse me, मेरी क्या हो रही है? बाल, it's everything aging, right? So there is a whole process of aging where you're losing your collagen, you're changing your skin, आपकी ताकत बदल रही है, आपका metabolism change हो रहा है, सब चीज बदल रहा है. Now, how do we work on it at the right time? Most important is accept. If you don't accept that your body is going to change, you're not working on it. So those dark pigmentation, those hair issues, ठीक है ना, मेरे बाप दादों का भी बाल गया हुआ, तो मेरे तो जाने ही बाल थे, enough within some parts. But how you can do something better for it? So coming from cosmetic, hardcore acceptance of various different aspects of life, which is also good. But accepting that other people are substandard. सबसे बड़ा एलर्जी लोगों को क्या होता है? mediocrity से. How can you not understand this? You know, that's an issue of acceptance, and that comes in the way of living happily. So when you are, let me bring a corporate mythology component into it, because JB ने तो बोला और मैं मारवाड़ी हूँ और यहाँ आधे से, I'm sure how many of you are Marwadis here? Right. So I can see this. James, okay, Gujarati, yeah. So we all are hardcore people here. I'm not going to be biased and classism any longer. I'm going to spend 1 minute here. Here, the most interesting part of this photo, you know what? Now let me go to the most interesting part of this photo, which I really love. Now, इस photo में अगर आप closely देखोगे तो he was the leader of this family, right? उनके बाजू में, right? शिव जी के गले में क्या है? नाग, नाग और इस चूहे का क्या संबंध है? Right? इनका वाहन कौन है? चूहा. ये कौन है? इनका वाहन कौन है? मोर. मोर का और सांप का क्या रिश्ता? ये कौन है? और ये इनके वाहन और ये इन दोनों का रिश्ता क्या है? When the leader of the family, when the convener, chairperson, convener of the family, or the leader of your organization has to handle the people, जिसके advisors और जिसके support team एक दूसरे की खून के प्यासे हैं. How will you run the organization? How will you run your family? Because when you're aging, it is one of your responsibility to take care of your subordinates and family. But एक reason why this family runs so great, you know why? Because Shivji के पास एक powerful weapon है और power है. You know power? You know the story about समुद्र मंथन? तो ये जो निकल रहा है बाहर अमृत निकल रहा है. मतलब अमृत के पहले जीवन में बहुत सा मंथन होता है और तब जाके अमृत निकलता है और उसके पहले बहुत सारा जहर निकलता है. और शिवजी में एक खासियत है कि वो जहर पी जाते हैं और अंदर जाने नहीं देते हैं और अपने पर असर नहीं आता. Now, if the leader of the family, and if you are aging gracefully, if you are able to have this ability to take all the poison of the family, yet not get disturbed, fatigued, frustrated, angry, then accept it. Present. You know what is the next issue that is giving gifting? अब वो gift tax और इस सब चीज के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ. मैं बात करने वाला हूँ medical gifting के बारे में. कि आप medically क्या अपने आप को अपने जाने के बाद क्या छोड़ के जा रहे हो? पीछे से property, estate planning. Boss, we are the gods of estate planning. So I was speaking with one of the top estate planner consultant who runs a website. I don't want to take names here, but estate planning is so important, and you guys have been helping us. But what about other than your property and real assets? And what about other than your financial assets? Let's focus on that. When we talk about giving and gifting, well, we all know that we are having a blood donation beautifully. I think he's already gone back to the He explained the importance of giving. Something which you cannot earn, something which you cannot manufacture, something which you cannot clone get,
and that is your blood, that is your organs. By every one person who decides to donate, even we try to use the big shot people, just motivate people. Whole idea is, आपके पीछे से आप बहुत दिनों की life को so don't waste it, don't let it burn just like that. Use that. It's a very simple thing. Go to the ZTCC website, pass on a link, उसके ऊपर आप register करो, एक donor card बना दो, अपने personal रख दो, और please अपने family से. भाई अगर मैं down ना, please don't just burn me completely. Leave me behind. Let's आप अपनी property, material thing छोड़ के जा रहे हो, और जो असली use की चीजें वो साथ में लेके जा रहे हो. और हम वो इजिप्शियन तो नहीं है ना, नहीं मैं तो जा रहा हूँ साथ में नौकर भाई काम कर सबको लेके जाने वाला हूँ, ड्राइवर को भी रखूंगा, मेरी मर्सिडीज भी रखूंगा, मेरी रोलेक्स की वॉच भी रखूंगा, अगले जन्म में काम किया. So you have to understand the organs happen. Now there is another component. Now I have a successful YouTube channel. और मैंने सोचा इसमें इतना सारा इंट्रोडक्शन किया, इतने सारे मेरे एकेडमी के बारे में बताया, लेकिन ताली बजी सिर्फ इसी पे YouTube पे. But you need to understand that is because you are leaving a legacy of knowledge behind. आप अपना knowledge भी पीछे छोड़ के जा सकते हैं, लोगों को दे के जा सकते हैं, and that was one of the primary intention. It is purely a knowledge channel for women in child care, and I realized no marketing, no promotion, no advertising, it's all organic growth, and still it became so big because knowledge is more powerful. You leave behind a legacy of knowledge behind you in whatever way you want to, whether it is writing a book or creating recordings which is going to be used perpetually. हाँ मुझे मालूम है हर 5 साल में नई गवर्नमेंट आएगी और उससे कुछ रूल बदलेगी and then the things will become obsolete, but still there are some things which will already be. Now I'm going to talk, everybody is talking about the legal will, and all of us come to you guys for asking for help for legal. How many of you know about this term called living will? Right. So I hope you also talk about the living will to your family. Now I'm going to ask you this question. How many of you guys made your will? How many of you guys have even thought about making your living will? आप लोग अपना will खुद नहीं बना रहे हो, हम लोगों से बनवाते हैं, हम बेचारे से इंसान अज्ञानी पूरा का पूरा हमारा पॉपुलेशन, आप लोग अपना ही will बना रहे हो, because we take it for granted. ठीक है ना, अगर तुम लड़ेंगे तो लड़ो मरो यार, then you don't deserve it. नहीं मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, समझते हैं एक दूसरे को, अपने आप में काट के खा लेंगे मेरे पीछे. But that's not what we think about. So we need to plan. But I want to say a bit about the living will. Now, what is this living will? Living will is an advanced medical directive, and the whole idea of living will is that you want to die with dignity. My tells me, बेटा मुझे बीमार बात नहीं, meaning जब मैं ICU में हूँ और अगर मैं ICU में admitted तो मुझे ऐसी vegetable state में जा रही है. But at the same time, अगर विजेता का husband अगर कमीना होता और उसको ICU से switch off कर दिया होता तो आज मर सकती. So a big round of applause because they matter. Trust me, I know the inside medical background because I was in touch with the intensivists there in the ICU, and every day the things when it started deteriorating and was what will be the outcome. And I was speaking to her partner, he's also a close friend, and we were discussing and the kind of motivation he had and the balance he had to see to it that she saves through. जरूरी नहीं है कि सबके पति और पत्नी इतने प्यार मोहब्बत वाले हो, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे इतने प्यार मोहब्बत वाले हो, और जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई. You need to clearly think that आपको दो चीज समझनी है. आप ऐसे इंसान को अपने हेल्थ का पावर दे रहे हैं तो आपके लिए चाहे वेंटिलेटर लगाना है या नहीं, आरटी डालना है या नहीं, आपको अगर इंट्यूबेट करने के पहले ट्रैकियोस्टोमी करनी है कि नहीं, ट्रैकियोस्टोमी करेंगे, हो सकता था इसकी आवाज चली जाए, राइट, ऐसा भी हो सकता है. This is the best motivator I can think of it. And actually all of us want someone who's rationally thinking, not emotionally thinking. नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा घर बिक जाए, मेरी जमीन जायदाद बिक जाए, मेरी किडनी भी बेच दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को बचाऊंगा. बट माँ ने ऐसा नहीं सोचा था. माँ ने सोचा था कि पूरी जिंदगी में जो सेवा कर रही हूँ, मेरे पीछे से तुम वो चीज, और बाद में हाथ में कुछ नहीं आया. So I know of a doctor in Malad who was on a ventilator in ICU and was bedridden for years together and nothing happened. I know so many patients. Now there is a problem with doctors. अगर आपके फैमिली में अगर आपके दो बच्चे हैं, एक ने बोला नहीं 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 नहीं, बेटी आपने बोली नहीं नहीं नहीं, वेंटिलेटर कुछ बंद नहीं करना, चलने दो, जैसा होगा जो होगा. Even if one child says the doctor is not going to switch off, because then I am worried बाद में जाके केस ठोक देंगे. There was one doctor, उसने है ना, एक पेशेंट था, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया क्योंकि चलेगा, उसको पता नहीं था, फैमिली में बताया, मालूम पड़ा कि उसका एक बच्चा यूएस में रहता था, उसने डॉक्टर कनाइड विद माय फैमिली मेंबर, और उसको उसने he was party to the crime, and उसको सर्टिफिकेट नकली देके उसकी बॉडी को चला.
The doctors are scared. But if you have left the directive, it becomes very easy. Now, let me make it simple for you. That if you want to talk about this, I'm not going in detail. I just wanted to sensitize you with this issue. And you need to fill out a form. There are two components. A, you express what are your wishes about your body and how you want to handle it, and what all things you are okay with and what all things you are not. So there are some people who are not okay with something, some people okay with something. You tell them that यहाँ तक आप I'm okay and I would want to. अगर मैं बनने वाला हूँ तो मैं चाहूँगा कि भाई इतना तक आपका अगर चांस है तो I want my body and because I am full of life. I want to do more and more. I don't want to die. Same time, if I realize कि मेरे जो सारा financial freedom planning मेरे family के लिए वो मेरे आईसीयू के बेड में पड़ा रह जाएगा और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंट्री हो जाएगा यार दिस इज नॉट व्हाट आई एवर थॉट फॉर आई नेवर वांटेड दैट ये डिसीजन कौन लेगा यहाँ आपका जब सेम माइंड में आप हैं तब आप ले सकते हैं और बना सकते हैं व्हाट यू डू यू अपॉइंट वन पर्सन इन योर family your friends or someone intellectual maybe your a close doctor friend or whoever who will take this healthcare decision on behalf of you and it's like a power of in the medical that is now this law was not existent. This is just recently come. So please sensitize your people about it. Maybe some other time we talk about it. Now let's go back to this Samudra Manthan. Samudra Manthan में एक और खासियत हुई थी जब वो देव और दानव आपस में लड़ने लगे थे और आदर्श मिल के उन्होंने किया था जब churning of the Samudra. तब before the wish, I mean before the Amrit wish had come into that. But ये जो अमृत निकला था ना ये कौन लेके खा निकला होता है? नहीं गोविंद ने तो सबको पिलाया था और लोगों को बेवकूफ बनाया था दानवों को कि भाई तुमको नहीं देंगे हम देवों को देंगे मोहिनी ने खाली राहु केतु दो जन थे जो बीच में पी गए थे उनकी कहानी किसी और से सुन लेना आज मेरा वो सारा चैप्टर नहीं है बट मोहिनी ने खाली सर्व किया शी वाज सर्विंग ओके हनुमान अब हु इज हनुमान गॉड ऑफ हेल्थ राइट मीनिंग अगर आपको जीवन का अमृत चाहिए तो आपको हेल्थ को तो फोकस करके प्ले करना ही पड़ेगा now that is the next important that how do you educate yourself for ailments never stop learning you need to keep learning about the new thing yesterday night I was giving a whole talk on osteoporosis and calcium and other things to a group of doctors so I will say that it's called a silent habit अगर आपने यंग एज में इन्वेस्ट नहीं किया अपने बॉडी हार्मोन्स में तो ओल्ड एज में कुछ अगर चाइल्डहुड में आपके बच्चों को आपने अप्रोप्रिएट कैल्शियम इंटेक नहीं कराया तो ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस जब वो बूढ़ी और ऐसे करके ऐसे चलती है उसका कमर में गांठ आ जाता है अरे देखो कुबड़ आ गया इसको इसलिए जन्म के पाप इसलिए इतना टॉर्चर किया ना इसकी वजह से साथ बहू को इसकी वजह से ऐसा इसको ऊपर बकवास इट इज ओनली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गॉन हेवयर osteoporosis which has got multiple microfracture and this is finally compressing the compress उसकी वजह से उसके हेड one patient comes to me डॉक्टर मेरी हेड कम हो गई डॉक्टर मैं सच बोल रहा हूं विश्वास नहीं कर रहा चीजें मल्टीपल स्मॉल चीजें meaning what I'm trying to say is that you need to pay attention to these things next is dementia memory my memory is going to fail us very very soon trust me it is not going to be perpetual आप जो इतने शार्प इंटेलेक्चुअल फाइनेंशियल विजार्ड है इमेजिन आपके सामने आया क्रेडिट में एंटर करना है डेबिट imagine the flight of your mind at that and that is what you need to work on you need to take care of your memory you need to start working and exercising your brain and take appropriate nourishment and nutrition to prevent that there are diseases yesterday evening I had this doctor who sister had come and she had a fantastic life she was a lawyer and she was walking like suffering and explosive speech बोलने की बात है मुझे पानी चाहिए और this happens in old age is very serious walking and talking like this again it can be treated if you pick it up early before the damage is happening you need to take that stroke for example a stroke आया छोटा सा क्लॉट ब्रेन में you need to reach your hospital immediately so a message take a message आप पहले से डिसाइड करें आपको हार्ट अटैक आएगा आप कहाँ जाएंगे और अगर स्ट्रोक आएगा तो आप कहाँ जाएंगे आपके सारे फैमिली मेंबर सबको पता होना चाहिए और कौन से हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर का तरीका है यार मार्केटिंग कर रहा है अपने दोस्तों की this not because if you take action immediately the long term damage of your neurological cells will not be there अगर अटैक आया यहाँ बाजू में अनोटी हॉस्पिटल है उसके जो एमडी हैं उसके जो medical system मेरे पहचान के डॉक्टर पार्कर इज क्लोज टू मी डॉक्टर अश्विनी इज वेरी क्लोज टू मी वेरी क्लोज फ्रेंड्स the moment a patient of stroke walks in the hospital, there is a code white or something like they call it, and no MRI is done. OT में जितने भी procedures elective है सब stop हो जाते हैं जब तक ये clarity नहीं आए कि इसको setting की जरूरत है या इसको वो clot के लिए treatment की जरूरत है तब तक कुछ नहीं करते
If good hospitals have these protocols in place, all that is needed that you need to know the channel. One of my very close friends is a very senior neurosurgeon at Lilavati, and he was working as the head of department at AIM for neurosurgery. He also says that there are awareness programs for stroke all across the city of Mumbai. So you need to understand कि आपको ज्ञान तो है पर एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरिया में आप हो, आपके घर के पास में कौन सा सेंटर है जो आपको इमीडिएटली टैकल कर सकेगा। क्योंकि स्ट्रोक आने के बाद में फैमिली में अच्छा मेरे फादर को स्ट्रोक आया है, डॉक्टर कहाँ लेके जाना है? मैं दुर्गा लेके जाऊँ, नानावटी लेके जाऊँ, या मेरे बाजू में दुर्गा हॉस्पिटल वहां लेके जाऊँ, या मेरा एक दोस्त है उसका नर्सिंग वाले डिसीजन वहां नहीं लेना है कि पहले से लेना है। I mean, how stupid will be when I ask you, भाई मेरा रिटर्न मार्च में फाइल करूँ या मैं सितंबर में फाइल करूँ या दिसंबर में? वो आपकी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, सबको पहले से पता है। ये चीज आप लास्ट में मेरे को 31 मार्च को मत पूछो कि फाइल करना है। So you know the analogy what I'm trying to tell you. This is so silly if you are not planning. Another thing is medical insurance. जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो कितना होना चाहिए डॉक्टर, कितने की पॉलिसी निकालू मैं? $1 million क्वेश्चन। वेरी सिंपल। आपके आसपास का जो हॉस्पिटल है जहां आप इलाज करना चाहते हो और आपका जो डॉक्टर है जिसके पास आप अपना जॉइंट रिप्लेस कराना चाहते हो, करना पड़ेगा, आधे जनों को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो कैटरेक्ट, इसके बाद आप पता लगाओ कि वहां क्या चार्जेस है, उतना कवर होता है कि उसके हिसाब से अपना डिसाइड करो और उसको थोड़ा सा टॉप अप कर लो, क्योंकि उसके अलावा अनफोर्सिन चीजें भी बहुत कुछ हो सकती है। So that is very simple maths, right? So you can decide on what should be the limit of it. So मैंने तो 5 करोड़ की ले ली है, कोई नुकसान ये डॉक्टर लोग का। Another one, छोड़ो ना यार, आएगा तो खर्चा करेंगे ना यार, छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। Everybody has that mindset. It is your choice, but this is a small trick that you can do. Now we come about vaccinations. Okay. Now vaccination, I was a part of US and India. US-India strategy forum, the think tank which gives recommendations to the planning commission. Now NITI Aayog, the erstwhile planning commission, and we used to give them the data of कौन से एज पे क्या वैक्सीन करना चाहिए, इस एज में वैक्सीन चाहिए या नहीं, यस चाहिए, कौन से वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन जो आप इस एज में भी ले सकते हैं और यंगर एज में। से फॉर एग्जांपल a woman who's less than 45, have you taken your cervical cancer vaccines? And has taken the, but there are so many people who are not aware, और अगर aware भी हैं तो their doctor has not been vociferous enough to live. It's like a chartered accountant not telling you, हाँ ठीक है यार देखेंगे मैं फाइन नहीं भर के अपना चलेंगे। Why do you want to pay the fine when you can file the return on time? Now that is the same thing for vaccination. Why do you want to suffer from a disease which can be prevented by vaccine? What are these vaccines? Flu vaccine, COVID vaccine, I'm sure you're aware. Fitness, if you have not taken it. Pneumococcal vaccine, people are not aware about that. This is very important that pneumococcal vaccine has to be taken. So please talk to your doctor. I'm not getting the details today. Our house is open. I'll be waiting for some more time. If you have a question, I'll be answering that. I'm not wasting your time for every individual vaccine. But these vaccines can be taken, especially the senior citizens. तो मेरे यहाँ पे हर साल पूरे फैमिली का सामूहिक वैक्सीनेशन होता है, एक साथ सीजन आने के पहले सबको पूरा करते देते हैं। It's very simple and it's not a big deal. The cancer का वैक्सीन अगर आपने अपनी बेटे के लिए लिया, अभी young boys also are given vaccine. What is the HPV vaccine? It prevents from cervical cancer, vaginal cancer, vulval cancer, anal cancer, oral cancer, penile cancer. Penis सभी cancer. मेरे लौंडे को मैंने दोनों दे दिया है, पॉटरी वाले का उसका भी मना वाले तो छोड़ो यार, तू ले ले बेटा, वापस से ले लो पापा, क्योंकि पहले पॉटरी वाले का 4 वायरस के खिलाफ उन्होंने वो 9 वायरस के खिलाफ है, लाभिक 9 है और 4 तो प्रैक्टिकली 5 नहीं आते हैं, दे देते हैं बेटा। ठीक है, दैट्स इट। He's in medical college, he would understand, he not say no to me. We did that. So I have given it to my son. I don't feel ashamed in giving a vaccine a second time because I know it's safe and giving you a better protection. Corona vaccine, come harm, is better. So that is another thing. So that's why invest, not just in the money, also. Never say never is just one word I want to say that you cannot say enough. You will never be kicking your boot. आप घर में खाली एंटी माइंड बैठ ही नहीं सकते, अदरवाइज आप उस जमाने सब एक इतना इंटेलेक्चुअल ज्ञान और नॉलेज लेके आप घर में एंटी वैक्सीन दें, यू विल हैव टू एंगेज इन समथिंग। सो प्लान योर टाइम कि जब आप रिटायर हो गए और देन यू आर हैंडिंग ओवर अ बिजनेस एंड ऑटोमोटिव बिजनेस, तो आप क्या करने वाले? Besides attending the CPE and getting some points and getting your degree, उसके बाद भी तो और भी कुछ करना है within. Find out your passion and do something to engage your mind that will keep you healthy because you'll be active physically, emotionally, psychologically, and mentally. So you need to pick that up. Now, last G, that is gratitude. Now, we always feel that we need to thank God for so many things and thank God for, but you need to remember one thing, that unless you feel gratitude for what you have, आपके अंदर वो हमेशा कमी रह जाएगी। यार ये मैं चाहता था हुआ नहीं यार, ये मेरे दिन छोड़ो यार,
Where do you end? Where is the rat race ending? You create that, and जो भी मिला gratitude से start करो. That gives you a peace of mind and psychologically a sense of satisfaction. And that actually, with a good lifespan, gives you a reason to be thankful. Classes half empty, half empty story का सबको पता है. So I always say that if you look at empty and at the end of it, मैंने सब कुछ किया लेकिन देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बहू को, आजकल के बच्चे देखो, grandchildren. But this is not what you want to do. You want, okay, that's their life. They want to do whatever they want to do. And this brings me to the last slide, and that is the different types of quotients which I always say. Now, IQ, intelligence quotient, अगर वो नहीं होता तो आपको कहना नहीं होते. या तो आपके parents के बहुत पैसा है किसी और को एग्जाम लिखवा के आपको चाहिए. Possibility is very good. ठीक है, हमारे मेडिकल में तो फीस भरवा सकते हैं एग्जाम नहीं दिलवाते. तो IQ, IQ is something which you, unless you did not have, you wouldn't have it. So I know all of you are high IQ, but something called as EQ, emotional quotient. Daniel Kahneman, he talked about Daniel Goleman. He talked about the 4 pillars of emotional intelligence. 1, self-awareness. 2, self-management. 2 आगे करोगे. अपने आप को मैनेज करना सीखो, अपने आप को हैंडल करना सीखो और अपने इश्यूज को पहले सीखो. तब आप किसी और को ज्ञान दे सकते हो. ठीक है, नंबर 1. These are the 2 pillars. And the third pillar in both pillars is empathy and the social behavior. मतलब आपको मालूम है कि सामने वाले को ये करना है, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा है. तो पहले आप अच्छे हो. अरे बात नहीं है. This is a common sense. यार मैं बोल रहा हूँ doesn't work. Does it work? No, it doesn't. And these are in profession. These are in patients. हमें बात करो नहीं सुनने वाले. Everybody, they will change the CA. You know, changing of CA is more difficult than changing of doctors, which I know very well. You know, because आपको डॉक्टर से NOC नहीं चाहिए, CA से NOC चाहिए. So you're obviously more smarter and powerful than a doctor. The next level, you need to understand empathy. Empathy मतलब समझते हो? Empathy को है ना, putting yourself in other person's shoes. But empathy is 3 components. Cognitive empathy, सामने वाला क्या सोच रहा है. Emotional empathy, सामने वाला क्या feel कर रहा है. But the most important component of empathy is the concern. आप क्या कर रहे हो उसके बारे में? आपको समझ में आ रहा है ना सामने वाला क्या सोच रहा है. ऑपरेशन मुझे बंद कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है. तो मुझे बंद करना है. So I have, what is my, yes, I have to wrap up quickly. It's what is my, that is called as concern. I'm also understanding what is going on. And that is something which we lack. हमको लग रहा है कि ये बच्चे लोग ही कर रहे हैं, आजकल ये समझ नहीं रहे, लेकिन आप उसके लिए लेट को कर पाएंगे. That is what you need to learn. Behavioral quotient is how you behave, your body language, how does it work. It is not just about your knowledge. It is not just about your communication. It's also about how you behave with others. Because people are not just listening. They're also watching and feeling what happens when you are around. So you take care of that. Spiritual quotient is something which I always do. Ethics is permanent. God is temporary. People like you and people like us, we are supposed to be at the highest level of ethical standards. Because हम जैसे लोगों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं अगर ethical नहीं, right? Imagine by rotation. अरे यार वो है ना हर महीने 2-4 जनों की फाइल पकड़ता है, इनकम टैक्स देता है, कमीशन खाता है, उसी से पैसे कमाता है. वो ऐसा आदमी है. स्टोरीज बहुत सुनते हैं, राइट? सेम थिंग डॉक्टर जानबूझ के रेफर करता है, जरूरत नहीं तो भी ऑपरेशन कराता है उसके बाद. आई डोंट बिलीव इन दैट. ट्रस्ट मी, आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन और मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी रेट है it's almost like 70-80%, because of which CNA Asia from Singapore flew in down. They covered me. How my cesarean section rate is so low. Normal delivery. मैं जब normal delivery करता हूँ क्या मेरी income कम है? नहीं. I'm making more money than my colleagues. Otherwise, I wouldn't be wearing a Rolex and wearing a Merc. That also invite money. जब नोटबंदी हुई थी तभी मैंने Merc खरीदी, तो उसमें है मेरे पास पैसा. Return tax paid money है. Why? Ethics. I'm sure all of you understand this more than me, that how you can be ethical and also on enough. Last, the most important thing, AQ, is adaptability. When I say adaptability quotient, we have never thought in this. How many of you heard this term? Actually, frankly, right? Very few of you. इंसान क्यों सबसे powerful species है? Because we have the ability to adapt as compared to others. We have the ability to communicate better than others. We have the ability to learn better than others. And why are we not using that skill? If we don't use that skill to adapt, we are going to fail. So let's look at the key takeaways. We need to look at retirement planning, but not just in financial sense, but all through physical, mental, and emotional sense. Life is not just about taking care of your financial freedom from monetary aspect, but you have to go beyond that. And we also have to take care of our physical, mental, and nurture relationship. Identify your hobbies and professional areas which you can pursue. यार सबसे बड़ी बात है जवानी में टाइम नहीं होता है.
और बुढ़ापे में इतना टाइम होता है कि करने का समझ नहीं आता। जवानी में नींद के लिए समय नहीं मिलता है, देखो सोना है सोने के टाइम, और बुढ़ापे में साला नींद ही नहीं आती है। करने का क्या, 24 घंटे में मुश्किल से 5-6 घंटे नींद आती है रोते पीटते, और उसके बाद में बाकी के 18 घंटे 16 घंटे में क्या बिकॉज आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी, आपका शरीर नहीं चलेगा। इसलिए मैंने मैं 4 दिन का मेरे पेरेंट्स को लेके गया, मुझे शर्म आ रही थी कि मुझे ही चलने में दिक्कत आ रही थी, पेरेंट्स के नाम पे पालकी लिया और साथ में मैंने भी चुपचाप seriously, and I feel embarrassed because I think I'm very fit, but it is not, the fitness is not by looks, it is also by functioning ability. And I know because जवानी में कबड्डी और क्रिकेट के दोनों गुट्टे तोड़ लिए थे, उसका भुगत है. What you sow, so can you reap. So you need to start working on that. Lastly, we need to remember that when you are working on your money planning, आपके बैंक में 10 करोड़ है या 50 करोड़ है, अगर आप वो 4 पैसे उठ के संटास आप नहीं जा सकते हो तो क्या ही फायदा. So you need to be healthy to enjoy your finances. With this, my last parting quote is from a very, very, very powerful book which I really remember and I love to read a number of times, that Bhagavad Gita. Chapter 2, verse 15. Yam hina vyasante pursam pursaspa samadukha sukham dhiram. So with a pure cultivate. This is what Lord Krishna told to Arjuna, saying that if you are able to balance both extreme happiness as well as distress, and you're studying both, only then you are eligible for liberation. Whatever is the stress, whatever is the disease, whatever comes your way, if you are able to cope up and learn to handle those diseases, stresses, anxieties, and problems of health, you are only then destined for liberation. Thank you very much for attention here. Thank you. Yeah, so the answer is below 40. So, thank you, Dr. Mukesh, for this enlightening session. Oh, we welcome our chairperson, Arpit Kabra. Say Arpit Kabra. Team, wow, WIS, Devinagar is really to propose a formal vote of thanks. I call upon Chintan, CA Chintan. Thank you, Vijayda ji, for this opportunity. Really, Dr. Mukesh, it was an not only an eye opener, but also you have shaken up everybody. If those who have got on sleep, definitely everybody has woken up. It was an amazing session, amazing talk. Thank you so much. And we, on behalf of JB Nagar, I request everybody to carry on the loud. One word. Yeah. I need to express my appreciation for your team because, I have not come across many people organizing these kind of health awareness activities and giving back to the community activities like blood donation drive. And I think this is something which is like this Sunday, we doctors had organized a blood donation drive. All of us doctors donated blood for our patients. Now imagine that feeling is amazing. And I'm so happy that all of you have organized this. Please take advantage of these camps because they were bargained and subsidized and everything. And if you create that system, which I have been told by your team, that you normally want to do it at least once in a year so that all of your all of your, chartered accountant fraternity is regularly taken care of. Trust me, it is an amazing thing. And I promise from my medical association, whatever referral system or whatever, benefit that we can give from our organization, we'll be more than happy to extend that support system for you guys. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mukesh. It was really a wonderful session. I recognize the presence of our WIC chairman, the secretary, the treasurer, sir, Sir Ketan Sayaji, Saurabh Ajmera ji. I would like to invite Arpit ji to say a few words. Good morning, everyone.
It's indeed a pleasure, absolutely. And the tale of coincidences and the lovely coincidence that has been happening to WRC all throughout, right from the time we've taken up, doesn't cease to end, doesn't seem to end at all. We're coming from a very, very healthy trip across Saurashtra, and I was supposed to be in Pune right now, but the rains played a game, and therefore I had to take a flight back to Mumbai, and probably from here I'll travel back to Pune. But this was written, I think Mahesh ji had called me that we are doing this, and वो जो कहते हैं पुण्य की जो बात है, अगर वो आप intentions, so what I understand जो अभी last मैंने सुना थोड़ा सा, if all of us are aligned towards an intention for a good cause, that karma, that punya, that everything comes very strongly, very solidly with each other. This happened to us when we were at Jamnagar. First we went there. What an amazing session, what an amazing gathering. We were told that hardly people would come because July hai, return hai. From the time we landed on the airport, we were there in an academic institution and we were welcomed by so many people just for one thing. They want to have Project Saptarishi, that is what we launched at WRC, accounting museum, reading room, train and learn, all of these kind of things at Jamnagar. Reliance, Naira both came in, members came in, the new branches being set up. And from there, what an amazing coincidence, we were immediately called to Dwarka by a chartered accountant. Only 4 CAs there. But they said, sir, it would be a pleasure if you could come and visit us. Everything was arranged overnight. And therefore, we were at Dwarka. Just for those 4 CAs. And believe me, the kind of energy and the kind of, they showed everything that they want to set up there. Dwarka, maybe we should have a reading room and therefore the presence of CAs and everything there. They're more than happy to willingly welcome us. From there, we went to Junagadh, the biggest, one of the very strong study chapters, and therefrom there's a wooden Khotala. If anyone has been to Titlis, Mount Titlis, sir, you'll forget that experience if you go to wooden Khotala. The kind of experience, I mean, India, brilliant, brilliant. And absolutely all coincidences happening there, here, there, everywhere. We met people, and then we went to Rajkot, and then there also we met people who we met in Jamnagar, who we met. So, the kind of efforts that goes in setting up this, because everyone, the 75th year, the caption, trust, Vishwas, everything that is coming along with that chartered accountancy tag, we are welcomed by anyone, everyone, be it academicians, be it the industry, the trade associations, be it GST, be it department, wherever. So I think that is what, and today, this happens to be another coincidence. I was just traveling in Purvi, just called up, sir, please do take a detour from here. Otherwise, I was about to take a cab and go to Pune because I had to reach there for a conference. But if this has to happen, this has to happen. And आप लोग से सब interaction हो रहा है. Doctor साहब से मिला, and if he is so warmly welcoming all of us to let's do this. I think this is the this is a time of aggregation in whatever we do, however we do. The sheer volume, the sheer strength of chartered accountants that we have can make sure that each and every facility that we want can be available at a doorstep. And it's all about partnerships. It's all about organic partnerships that we are creating. And I think at WRC, we are committed towards that. Saurabh, Secretary, Treasurer, Ketan Bhai, Vikasa Chairman, Pinki, I think they are all working on only one and only one thing. Let's be an aggregator. Let's bring whatever is the best available to us, to all of us. From everywhere to all of you. And therefore, in every initiative that we do, one thing is for sure, our commitment is absolutely topmost. And that runs even into study circle when, Purvi and, Purva and, Mahesh, Ankush is here and everyone I see you, the kind of work they're doing. I think this camp will speak volumes. Bringing a 5-star hotel to do a CSR, that's an amazing initiative, right? So huge round of applause for the study circle. Absolutely, I believe in this function of let's work together for an organic cause, and believe me, things are gonna happen and they'll work out for us. Have a great learning, have a great time, and look forward to interact with all of you. Should you have any feedback, should you have any suggestions, please feel free to reach out to us. We are about to start some good tax clinics now. July season is here. I would be happy if anyone would want to volunteer. The region is gonna be the control office of tax clinics. That is going to happen. So all the 37 branches, all these study chapters for the first time are going to organize tax clinics for the benefit of all people across. Let's have a big tax clinic there everywhere. And we need volunteers, anyone who's interested into direct taxations,
anyone who's willing to, volunteer for services, more than happy to welcome you at WIRC. You will be that control center who will, guide this. Ketan Bhai is our direct tax committee chairman, and I think under his leadership, we'll be launching these clinics. We've already had so many programs, but yes, stay tuned to our newsletters. And networking zone is creating a lot of buzz. Everywhere we go, people are full of excitement saying कि sir networking एक जुमला लगता था हमको कि सब लोग फेंक रहे हैं हमारी तरफ हर बार networking. I think for the first time ever, it has actually got into place. It's got into existence, and it's reaping benefits. That is through a small technical initiative in newsletters. So I think please take advantage of all of that. More than happy to welcome your suggestions. Thank you very much. Have a great time. The 4 pillars of the WRC are here. जैसे फोटो लीजिए ऑडियंस के साथ में मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा खड़े हैं नहीं एक मिनट एक के पीछे का कोई वाले को सब जाएंगे फिर मुट्ठी करते हैं ना नहीं एक के पीछे एक ट्रेन बीच की बिल्डिंग चेयरमैन आगे नीचे आइए चारों फिल्म एक साथ सब साथ में आएंगे सबको सपोर्ट सबसे मजबूत पिलर सब लोग नहीं देखते हमारे हो रहा है सब आ रहे हैं सबका ऊपर से लो एरियल व्यू ये लाइट बंद कर Thank you. Thanks to the team. Back for the next session. Thank you.